slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vent.
And very shortly, a really exciting night ahead of us here at the Santiago Bernabeu in Madrid. My name is Derek Ray, and joining me for commentary is Stuart Robson. And coming up, pulsating action from La Liga EA Sports. It's Real Madrid facing Real Madrid. Well, this should be interesting today. I like the makeup of both teams. They really do have a good balance of attacking and defensive qualities. But the team that has the greater desire will probably come out on top. It did look on for them, but not to be. And the starting 11 for Real Madrid. Thibaut Courtois is the keeper of choice. Eder Militao plays with Antonio Rudiger in central defence. Federico Valverde plays alongside Jude Bellingham in the centre of midfield. And the main striker today is Kylian Mbappe. Crossing opportunity. And Bellingham has someone to play it to. Well, somehow the goalkeeper got to it. Now the short corner routine. Aurelien Tchouameni. Super tackle, and they've won possession. Rodrigo. Oh, what an opportunity. Big chance it is. Goalkeeper getting in the way. Superb save. And here's the starting 11 for Real Madrid. Thibaut Courtois begins in goal. Antonio Rudiger plays alongside Eder Militao in central defence. Aurelien Tchouameni plays alongside Federico Valverde in central midfield. And lining up through the middle in attack today is Kylian Mbappe. Well, you get the feeling so many in attendance here have come just to see this. Oh, they're in here, Derek. And a goal! That will do it. They've been pushing for it, and now they've been rewarded. Tchouameni is with Vinicius Junior. Shaqiri has the lead from goal and Aurelien Tchouameni. Rodrigo. They have faced each other in the group stages, and Ahmed have won against Sharjeel in the group stages, but they are now facing again in the top 8, so it will be a good match. We have a pause. Carvajal. Match is underway. And now Rodrigo. Here's Carvajal. His momentum. Is with Vinicius Junior. This will be And Bellingham. kind of game. Here's Mbappe. Both of them plays fine. Credit to them for winning back possession. Good covering by Ahmed. Carvajal. Vinicius Junior. Now it's Mbappe with it. To build up the game. And support available. Valverde. And back to Rodrigo. Vinicius. And off the post. That's effective pressure high up the pitch. This could level it. He's able to get a body in the way. By Rudiger. Comes in handy. Mendy. It's 27 minutes at the clock, And and Valverde. it's gonna be a really long game. Aurelien Tchouameni. Shaqiri on the ball. Tchouameni to Rodrigo. Well, passing moves like this will build confidence. Rodrigo building up. And slows down the game.
Federico Valverde. Chouameni. Here's He's Valverde. pretty much holding his composure well. Had a chance to whip it in here. His Sends it back. game, trying to find the spaces. Well read to but put an end to that attack. good covering by Ahmed. So now it's Ahmed's turn. That's what you call defending from the front. Possibilities here. Match is very competitive. Till yet. Carvajal. Rodrigo waiting What for can Bellingham. Real plays do for from this position? Bellingham. That was a bad pass. And Bellingham. Okay. And Now with Mbappe. Real chance. It was on its good way in. block. Heading it towards goal and Vini connecting with the Jr. with the crossbar. header. And Well, that he's was got to difficult. head that down, but I Hitting have the to say, crossbar. he's a bit unlucky, really. Federico Valverde. Here's Pretty much Carvajal. now has to build up his Rodrigo. game again. Is with Vinicius Junior. Mbappe. Now with Vinicius Junior. And still trying to get the shot off. Bellingham! Palmed away by the keeper. Kylian Mbappe. And Bellingham. Valverde. Mendy. And so it is, the first half story. Well, it is advantage Real after the first 45 minutes, but there's a long way from being settled. Rudiger. Now with Bellingham. And players waiting in the centre. Vinicius. Well, nothing productive, really. Mbappe. Here's Valverde. You feel like that initiative that we have taken is given. You feel like there are emerging players consistently. Like On the every ball, new tournament Rudiger. has a new face that is Vinicius dominating Junior. the tournament, being the underdog and just. Rodrigo. Aurelien Chouameni. And now Rodrigo. Very timely interception. As a professional player, what do you think? मतलब एक ऐसा player जिसका play style का आपको पता है, जिसकी pace का आपको पता है, जिसका game play, जिसकी sense आपको आप उसको understand करते हो. Do you feel like it's easier to play against him, or the guy who has no background, we have no idea how he plays, or he's the underdog? Do you think it's more easier to play against? Mbappe. Vinicius Junior. Well, they kept their shape defensively. Job done for now. I think most fans would be pretty happy with this man's display so far. Well, I thought he had a really effective first half. Not only did he get the goal that gave them the lead, but his general play was really good. He was a constant threat, and I'm sure we'll see more of him in the second half. और शर्जील अभी जो है वो अपना टाइटल डिफेंड कर रहे हैं माशाल्लाह. ये मेरे ख्याल से लास्ट टूर्नामेंट में आपके साथ डुओ में भी विन किया था इन्होंने. So you have a legacy together as well, mashallah. What a beautiful equalizer. So the ball is rolling again at 1-1. Bellingham. Well, great read there to intercept. अच्छा मोहम्मद अहमद की अगर हम बात करें तो माशाल्लाह he has been very consistent with our tournaments as well. He has been scoring top 3 consistently for the last 2 to 3 events. And
And now Rodrigo. I guess मैंने उसके साथ भी unlimited tournaments खेले हैं and in every tournament he is a winning player. Real in a good position out wide. Adil Abbas, if you could change anything about the esports, what a beautiful goal, mashallah. Game has done it again and it's 2-1 to Ahmed now. What a beautiful comeback by Ahmed. Of minutes, incredible stuff. Well, the action underway. Can Real find a response now? Mendy, Chouameni, and Bellingham. Aurelien Chouameni. अच्छा आदिल अब्बास, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा था कि if you could do something about the esports industry in Pakistan, what would you do? What would you change specifically regarding the FC FIFA game or games that you're relevant to? Well, I think पहले तो ये है कि it should be done by the government. There should be some support. There should be some support for the players and for the esports industry क्योंकि I think ये industry बहुत बड़ी है in the world, but in Pakistan we are pretty much behind. अगर मेरे पे बात आए तो जहाँ मेरी home goes and वहाँ पे मेरी ज़रूर I'll be in this try to help them in every cause. माशाल्लाह आपकी consistent performance के साथ साथ और उसके अलावा attendance के साथ साथ we have seen that you participate in all the tournaments and to promote the local tournaments and stuff, so माशाल्लाह that's really great. और जिस तरह से हम छोटे लेवल पे इस तरह के steps ले रहे हैं माशाल्लाह, it helps the community. But as far as the broader aspect of esports is concerned, definitely we need a lot of support from government or any even private investors as well, who could sponsor the players and who could sponsor events like this, mashallah. Exactly, this is pretty much what we need right now. So what do you think, like if we talk about the past of Pakistani sports industry, do you feel like जिस तरह का experience रहा है sponsors का with the organizing teams and with the players, do you feel like there is some sort of hesitation जहाँ तक बड़े sponsors की अगर हम बात करें कि वो hesitate करते हैं नए players को sponsor करने में या फिर नए organization को sponsor करने में because their past experience have not been really good. Do you feel like it affects the esports scene in Pakistan? I guess yes, because I guess Pakistan में अब जिस तरह taken it has been अब उसकी sponsorship I guess बहुत आगे जा चुकी है पाकिस्तान में. They are finding players, they are doing stuff for it. लेकिन उसके अलावा अब जिस तरह I guess PUBG हो गया, Free Fire हो गया, और भी बहुत सारी games हैं जिनको अब sponsorship मिल रही है पाकिस्तान में e-sports के through बहुत सारे लोगों को, और international sponsorship भी है. But सबसे बड़ा मसला आता है कि FIFA में we are pretty much behind in this. तो we think कि यहाँ पे जो चीज़ है बहुत सही होनी चाहिए. Well, time is ebbing away, and they're using this passing approach to marvellous effect. Real did well to regain control of the ball. And just 5 minutes remaining. Eder Militao. Here's Carvajal. Mbappe. Rodrigo. Sloppy in possession from Real. Adil, you have played with, mashallah, Sharjeel Nasir. So do you feel like he's gonna go for an equalizer once again? Well, I think yes, but we have pretty much less time right now because I guess 1-2 minute और 1 minute I guess stoppage time. This will be the last track, and if we can build on it, let's see. He has the ball. On to Valverde. And Good build up, but no end product. that's it. So Ahmed wins again against Shazil.
Assalamu alaikum everyone. We have Mohammed Ahmed, mashallah, the first top four qualifier. Mohammed Ahmed, कैसा फील हो रहा है? माशाल्लाह, you have been very consistent with the recent tournaments as well. आपकी परफॉर्मेंस पिछले 3-4 इवेंट्स के अंदर कंसिस्टेंट रही है. You have been scoring top 3. और इस इवेंट में कैसा लगा? Do you feel like कि अंडरडॉग्स मजीद आपको देखने को मिले और नए ऐसे प्लेयर्स, नया ऐसे टैलेंट आपको देखने को मिला जिनको देख के आपको लग रहा हो कि there is some competition and stuff. वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए वेरी नर्वस नाउ लेकिन अभी कम्पिटेटिव बहुत है और मैच तो डिफिकल्ट होगी सरंग के साथ We wish you all the best और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस just the way you made a comeback माशाल्लाह खूबसूरत इक्वलाइजर और उसके बाद another score for the win माशाल्लाह congratulations on being top 4 थैंक यू दैट्स फ्रॉम माय फैमिली have a very nice day inshallah we will see you again This is the kind of occasion we all relish as football fans. Hello everyone, great to be with you again. One of the real attractions of the south of France is the fact that Okay, so for this match we have and it's a pleasant day for Sharjil football Nasir here at the on the commentary box, and we have Sarankani versus Mohammad Abbas. It's a semi-final in the upper bracket, so it's got to be a tough match. Both are good players; they deserve the place, and let's see. now with Valverde. Sarankani attack कर रहे हैं. Sarankani in the yellow and Spot on with Mohammad that Abbas in the tackle. blue. So a Real Madrid corner. शर्जील आप किसको And he क्या favours the चाहते हैं कि inside कौन route. जीते किसको सपोर्ट कर रहे हैं किसके लिए जो है ना आपकी दुआएं जैसे भी कमेंट सेक्शन में देखें कि हर तरफ मोहम्मद हाशिर की दुआएं चल रही हैं फॉर एवरीवन मोहम्मद हाशिर इज करंटली प्लेइंग अ मैच फॉर द लूजर ब्रैकेट सो बहुत सारी दुआएं और बहुत ज़्यादा Goalkeeping, you've got to say. वेल विशेस हैं मोहम्मद हाशिर के लिए मे ही विन एज वेल मे द बेस्ट मैन विंस Super Markaz. या ऐसे ही है. वो अपनी नेचुरल गेम करें तो नेक्स्ट Eduardo राउंड्स में Camavinga. इंशाल्लाह जगह बनाएंगे वो, और हो सकता है लूजर्स के फाइनल एंड देन विनर्स के फाइनल के लिए खेलें वो. अच्छा शर्जील सारंग की गेम आपको कैसे लगी आई नो यू गाइस हैव पर्सनली प्लेड अगेंस्ट ईच अदर लेकिन माशाल्लाह गेम इन के पहले ऑफिशियल टूर्नामेंट में सारंग खेल रही है एंड आई हैव सीन हिम प्ले रियली गुड माशाल्लाह द वे ही परफॉर्म्ड इन द डुओस
और जिस तरह से वो आज परफॉर्म कर रहे हैं, ही इज अ रियली कंसिस्टेंट प्लेयर. डू यू फील लाइक कि हर गुजरते दिन के साथ हर अगला टूर्नामेंट पिछले टूर्नामेंट से बेहतर है, एंड वी आर सीइंग मोर कंपेटिटिव फीफा एटलीस्ट इन द गेम इन एटलीस्ट? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे जैसे आप देखते हैं कि आपको हर टूर्नामेंट में एक नया चेहरा नज़र आता है जो कि एक अंडरडॉग होता है, लेकिन सारिंग के साथ हमने काफ़ी और जगह पे टूर्नामेंट्स खेले हैं, लेकिन गेम में पहली दफ़ा खेल रहा है और उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से वो काफ़ी एक अच्छा प्लेयर है, रेगुलर खेलता रहा फीफा। तो उसके जो फर्स्ट टचेज हैं प्लेयर्स पे, जो कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से वो अभी काफ़ी आगे तक पहुँच गया। अभी 1-0 स्कोर चल रहा है सारिंग अटैक पे, और ये दूसरा गोल हो सकता है। नियर पोस्ट पे कोशिश, लेकिन इस वक्त कीपर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से सेव। बलवर्डे, यहाँ पे काउंटर अटैक का चांस है ओवैस के लिए। वेट कर रहे हैं थियो का कि वो रन बनाए, लेकिन एंड पे उनको वापस नहीं मोड़ना चाहिए था। सारिंग ऑन द काउंटर अटैक विद रोड्रिगो। अच्छा, दोनों प्लेयर्स फाइनल थर्ड में जो है वो बॉल लूज कर रहे हैं, और ये बहुत प्यारा क्रॉस और एम्बापे की जानिब से एक शानदार गोल, हेडर। 2-0 फॉर सारिंग। So Ajil, do you feel like हर नए टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना और अपनी एक लेगेसी डिफेंड करना, being the gaming defending champion, do you feel like it's a responsibility, it's something that makes you more cautious, more nervous, more excited about the game in the tournament? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप एक टाइटल होल्ड कर रहे हैं रिसेंटली गेम इनका, तो जब आप नेक्स्ट टूर्नामेंट में आएंगे तो एक तो आपको काफ़ी वहाँ पहले से जानती होगी कि यार ये लास्ट टाइम के विनर हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है बेसिकली। तो एक तो वो थोड़ा प्रेशर होगा, और दूसरा आप प्रेशर अगर कंट्रोल करते हैं तो वो आपके पास एक मतलब एडवांटेज की सूरत में भी बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने लास्ट टाइम आई हैव डन इट, सो आई कैन डू इट अगेन। बिल्कुल ऐसे ही, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखूंगा, और आई फील लाइक कि एज अ डिफेंडिंग चैंपियन आई फील लाइक कि बाकियों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, बिकॉज़ दे नो कि दे हैव ऑलरेडी डन इट ना, एग्जैक्टली एज यू हैव सेड माशाल्लाह। आई फील लाइक कि जो बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है कि दे हैव डन दिस, और ये दोबारा भी कर सकते हैं माशाल्लाह, इनकी गेम प्ले और बाकी सारा। तो आई फील लाइक कि उनके ऊपर प्रेशर होता है, इट इक्वलाइजेस द होल मैचअप। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप डिफेंडिंग चैंपियन के अगेंस्ट अगर लेट्स से प्ले कर रहे हैं, तो आपको एक तो वैसे ही प्रेशर होगा कि एक अच्छा प्लेयर, और दूसरा एक विनर है लास्ट टूर्नामेंट का, सो एक वो एक लेगेसी जो होती है ना, वो एक रहती है माइंड में कि यार ये इसको हराना है, और ये भी होता है कि यार इसको हरा लिया तो शायद टूर्नामेंट में ये जीत भी जाऊं। तो या ये बात। Assalamu alaikum Abdur Rahman. Thank you for your feedback. Inshallah, we are working on it and you'll get a better audio next time. 2-0 फॉर सारेंग। सारेंग और अवैस का मैचअप आई थिंक यहाँ पे आई वुड से, क्योंकि मैंने दोनों का गेम प्ले देखा हुआ है, तो यहाँ पे एडवांटेज जो है वो सारेंग के पास है। यहाँ पे तीसरा गोल करने के करीब थे, लेकिन एंड पे टैकल डाल दिया उन्होंने। सारेंग अब आई थिंक बॉल को होल्ड करेंगे। 2 गोल्स की लीड है उनके पास, सो उनको ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है अटैक को। ऑन दी अदर हैंड अवैस जो हैं वो काइंड ऑफ अब नर्वस फील कर रहे होंगे, आई वुड से नर्व्स का प्रेशर होगा उनके ऊपर। 2 गोल हैं, बॉल भी नहीं मिल रहा, तो रश करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आई थिंक कम बैक होना मुश्किल है। और इसी तरह तीसरा गोल। एक और अनाउंसमेंट है हमारी हाशिर भाई की मजीद सपोर्टर्स माशाल्लाह उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड ही हैज अ लॉट ऑफ ऑनलाइन फैन फॉलोइंग माशाल्लाह, सो अनदर शाउट आउट टू मिस्टर हाशिर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द लूजर ब्रैकेट मैच. या बेस्ट ऑफ लक टू हाशिर, लेट्स सी व्हाट ही इज कुकिंग, सो होपफुली ही परफॉर्म्स। डोमिनेट करते हुए यहाँ पे सारे हाफ साइड में भी चिप, और बेहतरीन बहुत ही गोल, खूबसूरत गोल. खूबसूरत, कोई चांस नहीं था कीपर के पास, और लीड बढ़ते हुए 4-0, एंड आई थिंक ये इसी तरह बढ़ती रहेगी, और कम बैक यहाँ से मुझे कोई सूरत नज़र नहीं आएगी यहाँ पे।
तो शर्जील बहुत कम मैचेस ऐसे रहे हैं एटलीस्ट टॉप 6 सॉरी टॉप 4 और टॉप 8 के अंदर जो इतने वन साइडेड रहे हैं माशाल्लाह सारिंग हैज बीन प्लेइंग रियली गुड एंड ही हैज बीन डोमिनेटिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट माशाल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स बट ही हैज बीन रियली गुड माशाल्लाह ऐसे ही है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है सारंग की अभी तक। तो लेट्स सी इसके बाद वो विनर्स के फाइनल में पहुंचेंगे। सो जस्ट नीड्स 2 more मैचेस, कंसिस्टेंसी दिखाएं और फर्स्ट टाइम जब गेम इन के वो चैंपियन बन सकते हैं। और 5 डेज इसी तरह इस मोमेंट पे आई थिंक अब अवैस को भी समझ लग गई है कि यार मेरे पास से बाहर है गेम। सो वो बस टाइम पूरा करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा humiliation से बच जाए, डबल डिजिट्स में ना जाए। if we talk about Awais and company इनके जो भाई हैं सारे cousins they have been really good mashallah as well they have been competing for the top 8 in almost every tournament so they're not some casual rookie player they have a really decent game mashallah लेकिन the way Sarang has been dominating this game it's absolutely stunning ऐसे ही है ये तीनों भाई जो इनके तीनों ही गेम, साद, अवैस, बासित, कंसिस्टेंटली हर टूर्नामेंट्स में आते हैं और टॉप 8 में जो है वो अपनी जगह बनाते हैं आई थिंक। और कोशिश भी कर रहे होंगे ये अपनी गेम इंप्रूव करने के लिए, जो चीज़ें ये लोग लैग कर रहे हैं। लेकिन आई वुड से कि या प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें और वन डे में भी ये तीनों में से दो आपस में एक दिन फाइनल खेल रहे होंगे। inshallah and once again we have another shout out for Mohammad Hashir I feel like now he should be in top 8 क्योंकि हमें उनका मैच किसी भी सूरत लाइव स्ट्रीम करना पड़ेगा because you know the audience has been going crazy about him बिल्कुल ऐसे ही है, लेट्स सी हाउ आशिफ परफॉर्म सो वी कैन। शर्जील आप आते हुए घर में किसी को नहीं कहते कि कमेंट हाइप मी अप और मेरा जो है ना एक तरह से सपोर्ट सिस्टम बने प्रमोट मी एंड स्टफ लाइक दैट or do you have people praying for you in the quiet या मतलब घर वालों को आइडिया होता है कि यार ये टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, लेकिन उनको इस गेम के बारे में इतना आइडिया नहीं है कि यार ये क्या सीन है ना। तो आ, दिल में वो दुआ कर रहे होते हैं कि यार वो जीते, लेकिन उनको इतना आइडिया नहीं कि यार वो क्या सीन चल रहा है, किस तरह की गेम है या क्या सीन है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स उनको पता होता है कि यार गेम है, तो होपफुली अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। inshallah and the vision of game and mashallah what we want to do is we want to change the narrative of game and all the parents who are worried about their pay और ऑफ साइड नहीं, आई थिंक एक गोल डाला है अवैस ने। सो आई वुड से इट्स मे बी या 5-1, बट कम बैक का चांस यहाँ पे नहीं है, बहुत मुश्किल है। 63 मिनट्स हो गए हैं, जस्ट 30 मिनट्स रिमेनिंग और मे बी 6th 1 कमिंग, नॉट येट बट सून इट विल बी कमिंग। Shazil आप काफी सपोर्ट कर रहे हैं सारंग के गेम प्ले को and you're always expecting a goal do you think we can score another goal या इसी अटैक पे शायद ये लें, क्या ख्याल है आप? what a beautiful goal by Sarang mashallah so as I was saying basically as Gaming our initiative is to promote esports and we want to change the narrative of Gaming how esports is taken specifically by the brown parents Pakistani parents they always had this narrative और ये एक और goal I cannot even finish my sentence and Sarang scores a beautiful goal once again ladies and gentlemen और जैसा कि मैंने कहा था कि अवैस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहेंगे, और उन्होंने यहीं पे गेम पॉज की और बोला आई थिंक दैट्स इनफ और यहाँ पे इस मैच का खत्म हुआ। और
Assalamu alaikum everyone. We have Sarang here dominating the game and actually making the other player forfeit. Sarang, कैसा feel हो रहा है? Do you feel confident about the match? ये बहुत अच्छा फील हो रहा है. आई थिंक आई प्लेड प्रीटी वेल अप टिल नाउ, लेकिन देखते हैं आगे बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं अभी, सो यू नेवर नो. So you have won the duo tournament. You know, you for us you were the underdog. You were really surprised when you won the duo. और आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मतलब you were enjoying that as well. कि आपने एक underdog वाली जो feeling है उसको काफ़ी enjoy किया. So do you feel like कि जो बाकी जितने players and they stand a chance after such a beautiful victory by you 7-1. What a beautiful lead. आई थिंक मैं जो भी मैच खेल रहा हूँ, मुझे जो दूसरा अपोनेंट होता है, दे डोंट रियली नो मी उस तरह, दिस इज लाइक माय फर्स्ट और सेकंड टूर्नामेंट, तो जो भी आता है वो मेरे खिलाफ मुझे थोड़ा सा इजी लेता है, बट मैच के बाद मैं बता देता हूँ कि So कौन basically लेता you have the advantage of है. आई being the underdog. डू आई Yeah. डू. Perfect, perfect. We wish you all the best and inshallah we'll see you again in the commentary section. थैंक यू, थैंक यू.
What a game we have in store for you today. The hype has been building all week and we're just moments from kickoff. All the action coming live. A warm welcome from the Spanish capital. Guy Mowbray with you for commentary alongside Sue Smith. And we've got La Liga EA Sports action coming right up. It's Real Madrid and they take on Real Madrid. Trying his luck. Excellent work in goal. Well saved. This is the Real Madrid starting lineup. Thibaut Courtois is in goal. Antonio Rudiger plays alongside Eder Militao in central defence. Eduardo Camavinga plays alongside Federico Valverde in central midfield. And the main man up front is Kylian Mbappe. Good patient build-up, but not quite the end product. This is the Real Madrid starting lineup. Thibaut Courtois is in goal. Antonio Rudiger plays alongside Eder Militao in central defence. Federico Valverde plays with Jude Bellingham in central midfield. And the main man up front is Kylian Mbappe. Federico Valverde. So we are back with the tournament. Bellingham. Once again, we have Adil Abbas and Abdul Basit, mashallah. The attack is over. Match is commencing and I have Asir Ali, my co-founder, Rodrigo. GAMEINN with me. On to and we're Bellingham. gonna throw some Basit. Rodrigo. Boys, what's up? I hope you're doing great. I hope सब enjoy भी कर रहे होंगे. Good patient build-up. I hope the best for Disappointing end everyone. to a good spell on the ball. Asir, कैसा experience रहा आपका? We have always seen Jude whenever Bellingham. we throw the tournament, हमेशा हमें कोई ना कोई एक underdog मिलता है, एक ऐसा लड़का मिलता है जिससे हम expect नहीं कर रहे होते Bellingham. yeah, he's gonna be in the top 8 and stuff like that. But still he qualifies. And What a beautiful goal! What The a opening beautiful goal, and goal! what a bright start it's been. Adil Abbas with the lead. The action underway once more, and the onus is on Real to find a response. Federico Valverde. Now Tchouaméni. For reference, Adil Abbas is the Rodrigo. defending champion of GAMEINN. He won the last tournament. In fact, 2 tournaments. On to Camavinga. FC25 solo and Bellingham. Real Madrid come away with it. Jude Bellingham. Rodrigo. Real Madrid trying to get things moving. It's offside, and that will be that. Aurelian Tchouaméni. On to Camavinga. Asir, आप किसको support कर रहे हो इस tournament में? We have Bellingham. the defending champion Adil Abbas. We have yet a beautiful Rodrigo. name, Ahmed, mashallah. He placed 3rd in the last tournament. We have Sharjeel Nasir placing Players 2nd. waiting in the और mashallah centre. एक और underdog, Sarang Kiani. What do you think is going to Promising win this looking tournament? attack,
Being very honest, आदिल अब्बास ने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा कन्विंस्ड हूँ कमेंट सेक्शन की वजह से। मुझे लग रहा है कि आदिल अब्बास जो है ना थोड़ा सा फिक्स्ड है। सो आई जस्ट वांट टू से कि यार मैं हाशिर की साइड पे हूँ, नो बायसनेस है। तुम लोगों ने जो कहना है किसी के बारे में कहते रहो यार। आई गेस आदिल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एंड आई गेस ही डिजर्व्स कि उसको आप लोग अगर फिक्स कह रहे हो ना तो ही हैज अर्न्ड दैट रिस्पेक्ट। तो मैं तो भाई हाशिर को सपोर्ट कर रहा हूँ और सारे ही हाशिर को सपोर्ट कर रहे हैं। लेट्स सी कि हमें एक आज गुड गेम हमें देखने को मिलेगी। Now pushing forward with options available. हासिर का लूजर ब्रैकेट का मैच अभी करंटली का मैच हो रहा है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी दुआ कर रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे मुझे रिक्वेस्ट है कि प्रे फॉर हिम, ही इज अंडर सच प्रेशर एंड वी हैव टीज्ड हिम अ लिटिल। तो मैं थोड़ा तंग किया कि द कमेंट सेक्शन इज टॉकिंग अ लॉट अबाउट यू माशाल्लाह, एंड ही इज अ लिटिल बिट नर्वस, सो प्रे फॉर हिम एंड वी विश ऑल द बेस्ट टू हिम। Jude Bellingham. Rodrigo. Kylian Mbappe. Carvajal. Mbappe. ऐसा असीम कंसिस्टेंट प्लेयर्स की कुछ खासी कुछ ऐसी खुशूसियात आपको देखने को मिलेंगी। वी हैव सीन सारंग स्कोर 7-1 अगेंस्ट अ वेरी डिसेंट टैलेंटेड प्लेयर माशाल्लाह, और ये आदिल अब्बास अगेंस्ट अब्दुल बासित, ही हैज स्कोर्ड 2-0 in just 35 minutes। बहुत अच्छा गेम प्ले है दोनों का, एंड स्पेसिफिकली अगर सारिम की बात करें लाइक ही इज द अंडरडॉग ऑफ दिस टूर्नामेंट मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने उसका गेम प्ले फर्स्ट टाइम देखा है इन द एफसी डुओ और उन दोनों ने बहुत आउट परफॉर्म किया ना माशाल्लाह। दे आर द विनर्स ऑफ द टूर्नामेंट, एंड बाकी दुआएं जो है ना मेरी हैं हाशिर भाई के साथ। हाशिर भाई जिंदाबाद, हाशिर भाई को मैं फुल सपोर्ट कर रहा हूँ बॉयज, लेट्स गो बॉयज। Having a try and a really good bit of goalkeeping to keep that out. Well, it promised so much but has delivered little. Well, it was a great save, that wasn't it? The 2-goal lead is still intact because they've worked so hard to get that. They just can't become sloppy now. So by the way, for everyone who's wondering why we're not actually commenting on the game, we have absolutely no idea. I'm a player of Dota, not gonna lie, I've never played a single game except Dota or Asir. मैं ब्रो काफ़ी ज़्यादा कैजुअल प्लेयर हूँ, बट आई एम बीइंग कंसिस्टेंट ऑन द टेकन राइट नाउ। तो फीफा का मुझे इतना पता है कि गोल होता है इसमें, तो मैं इसलिए कुछ ज़्यादा कह नहीं कर सकता। तो मैं चिल्ला दूंगा कि हाशिर ने गोल मारा, एंड what a beautiful goal, 3-0 by Adil Abbas, mashallah, what a beautiful dominance, absolute dominance by Adil Abbas. Ball rolling again, with Real Madrid left with a mountain to climb in this second half. Rodrigo. Decent move looked to be building, but that's it for now. माशाल्लाह आदिल अब्बास की भी काफी फैन फॉलोइंग है। हमने रीसेंट इवेंट में भी देखा कि he got a lot of thank you so much for the compliments. इंशाल्लाह आदिल अब्बास की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। he has been praised by so many people, but once again we have a comment of no Hashir will, yes we support Hashir will inshallah. Let's go boys, Hashir gonna win this. Mashallah yaar, zabardast. He's not even playing this game man, but he has so much fan following that Hashir is gonna win. #Hashir will win. Jude Bellingham. Eduardo Camavinga. Mbappe. Well, it did look promising, but threat averted. I'm really sorry, मैं थोड़ी सी एक्टिंग करूंगा कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। यप, आई कैन सी बहुत अच्छा पोजीशन शो किया जा रहा है, एंड बॉल एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर को दी जा रही है, और ये गोल की कोशिश बट थोड़ा सा नाकाम रह गए, एंड अब दोबारा से गोलकीपर ने पास किया।
ओपोनेंट को सॉरी Unable to retain possession. Played through We have no nicely. idea what's going on, honestly. We don't even know who's who. And another goal. It seemed all over before, but there's another to But really we know seal it. that Adil is at 4-0. Federico Valverde. Now Bellingham. Vinicius Junior. Funny comment. Goalkeeper ने pass किया Real opponent. Madrid regaining possession. my bad guys my bad This is what happens when The offside. organize a tournament. Gen Z almost. बॉयज मेरा सबसे पहला Vinicius फोकस हमेशा Junior. ये होता है कि ई स्पोर्ट्स को हम लोगों ने ग्रो करना है इस इंडस्ट्री के अंदर इवन दो मुझे अगर फीफा का नहीं पता दैट डजंट मीन कि मैं फीफा को ऑर्गेनाइज नहीं करूंगा मैं उनके for the पार्टिसिपेंट्स को breakaway here. अकोमोडेट नहीं करूंगा इट्स बीन लाइक 3 इयर्स हम लोग फीफा को भी अकोमोडेट कर रहे हैं टेकन को भी वैलोरेंट को भी लाइक एफपीएस गेम्स भी हमारे पास हैं और हम हर तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ऑब्वियसली एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए जिस तरह से हम लेके चल सकते हैं गेमिन को और ई स्पोर्ट्स को इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सीइंग ग्रेट प्रोग्रेस और मुझे लगता है गोल के करीब है बात थोड़ा सा इंटेंस सिचुएशन शो करूंगा ओ माय गॉड बहुत इंटेंस सिचुएशन है इतना मुझे पता है डी में गई है बॉल सो If we be honest about it, I personally I feel like FIFA की community सबसे मजे की है, what I have seen in Taken since our prize pools are good, mashallah, they're decent. I'm not gonna say they're too good, but they're decent, mashallah. If you talk about the regional tournaments and stuff like that, we started with 10,000, Yeah. Mashallah, this event we have the prize pool of 2 lakhs. Yep, So we have come a long way, mashallah. Even if we talk about Taken specifically, what we see a pattern is ever since the professional players have been coming to Islamabad just to play our tournaments, mashallah, there has been a decent increase in professional players for Taken as well. So what we have seen is the amateur players or players who feel like they don't stand a chance to win the tournament, they don't even participate. But if we talk about FIFA, there is always brilliant entries, and we see always one underdog or two or something like that. So personally I feel like FIFA की community जो इस्लामाबाद के अंदर is like really strong. Players are really decent, mashallah. So A really good interception to take 100% the मैं ball. किसी की भी मेंटालिटी को जज नहीं करूंगा कि वो किस वजह से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं किस वजह से नहीं ऑब्वियसली हर किसी के अपने कंसर्न्स होते हैं बट व्हाट आई हैव सीन इज कि फीफा की जो कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा इंगेज रहती है आपस में एंड उनके जो टूर्नामेंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा वेल और खूबसूरत गोल अब्दुल बासित 4-1 ज़बरदस्त अब्दुल बासित जिंदाबाद Real Madrid showing good width here. प्रेडिक्शन थी वो गलत हो गई है 7-0 की प्रेडिक्शन दी थी हारून अमान ने कि आदिल अब्बास 7-0 मारेगा लेकिन अब्दुल बासित ने basically if you talk about Abdul Basit or Saad or all these brothers, What a they're place very to lose decent the ball players, just when the chance was very on. consistent. They have been playing really good. I've seen their matches. Can he finish? Obviously, I don't know a lot about FIFA, but या ब्रो गोल्स मार रहे हैं ब्रो Surely they're क्या home and बात drying है with the win now. 5-1 और हाशिर भाई का क्या बना? Let me ask. Bro. Let me specifically go to the organizing team and ask हाशिर भाई का क्या बना? I'll be right back, everyone. Having a try. Struggling to keep the ball there. Eduardo Camavinga. Mbappe. Well, it was looking good, but ultimately nothing doing. Not a lot of time for him. Real exploiting the space on the flank. And that's where it ends. So मेरे ख्याल से एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने का मौका आ गया हमारे पास एवरीवन हु हैज बीन कंसर्न्ड अबाउट हाशिर प्लीज अपना दिल थाम लीजिए अपनी गहरी सी सांस ले लीजिए अगर आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं अगर आप बैठे हुए हैं तो लेट जाएं और अनाउंसमेंट ये है कि हाशिर 4-1 से लीड कर रहे हैं इस वक्त अपना लूजर ब्रैकेट का मैच एंड इंशाल्लाह विल बी सीइंग हिम इन टॉप 8 There we are, full time here, and it's Real Madrid. Ashir bhai, let's who will go. home happy, having taken all the points. Well, that was really
comfortable, wasn't it? The play going forward was so clinical. Took them apart at times and produced some top quality finishes too. It's a great result. बॉयज मेरे पास इनसाइड न्यूज़ आई है कि आशिर भाई जीत चुके हैं.
There have been days of eager anticipation prior to this massive clash. A warm welcome from the Spanish capital. I'm Guy Mowbray and I'm joined by the former England striker Sue Smith for commentary. And we've got La Liga EA Sports action coming right up. It's Real Madrid and they take on Real Madrid. Yeah, cheers, Guy. Well, it's so loud in here, isn't it? The fans are really up for this one, and I'm sure the managers will be reminding them, remember what you need to focus on and block out all of that noise. A chance to cross here. Valverde. Oh, good defending, just when it was looking threatening. This is the Real Madrid starting lineup. Thibaut Courtois is in goal. Eder Militao plays alongside Antonio Rudiger in central defence. Rodrigo plays with Vinicius Junior in the wide positions. And the main man up front is Kylian Mbappe. This is the Real Madrid starting lineup. Thibaut Courtois is in goal. Antonio Rudiger plays alongside Eder Militao in central defence. Vinicius Junior starts with Rodrigo in the wide positions. And the main man up front is Kylian Mbappe. So we are back with a banger tournament. Audience की request के बाद Hashir bhai, basically he's in the top 16 right now. He does not qualify. He will be qualifying for the top 8 इस मैच में, लेकिन ऑडियंस की रिक्वेस्ट के ऊपर हम लोगों ने उनका मैच लाइव स्ट्रीम वाले स्टेशन के ऊपर शिफ्ट किया ताकि ऑडियंस उनका मैच लाइव देख सके. So thank us. Well, so close to seeing an early goal there. If not for the keeper, they would have been ahead. Great save, though, you have to say. A big moment, certainly. And now they can give their hero of the hour a moment to enjoy it. On his day, Kylian Mbappe can be... आपकी बहुत ज़्यादा दुआएं चाहिए अगर आप चाहते हैं कि ये विनिंग प्राइज, ये विनिंग टाइटल, ये डिफेंडिंग टाइटल का चैंपियन आशिर भाई जीत के जाएं तो बहुत ज़्यादा दुआएं करेंगे. आशिर भाई की टीम लेफ्ट साइड की है, वाइट टीम. क्या खूबसूरत ट्राई, क्या खूबसूरत ट्राई. आपकी दुआएं काम कर रही हैं और दुआ करें ताकि अगली दफा बॉल गोल के अंदर जाए. There's space to attack here for Real Madrid. Having to stay patient here. Pulls it back. The approach play looked encouraging, but good defending to snuff out any threat. और ये हाशिर भाई दोबारा गोल की तरफ रवाना. Midfield possession a key part of the game. Right now, no part of this game. And they want to see a shot here. Rodrigo. और ये डी के अंदर है. हाशिर की खूबसूरत पोजीशन, पास, और ये खूबसूरत पोजीशन का मुजाहिरा करते हैं. वो भी सच. What a beautiful try once again. अब इस पॉइंट पे हाशिर भाई के कसूर नहीं है. जितने भी कमेंट्स के अंदर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग दुआ नहीं कर रहे. आप लोग दुआ करें, अगली दफा बॉल गोल में ही जाएगी इंशाल्लाह. Kylian Mbappe. What a chance here. It's there. That changes things. A goal for 1-0. Rodrigo. Chance to deliver into the box. Mbappe. And this could be.
promising looking attack, but it's come to nothing. Mbappe. This to level it. And that is a quality bit of goalkeeping. एक खूबसूरत ट्राई आशिर भाई की तरफ से इक्वलाइजर के लिए खूबसूरत ट्राई Valverde. सयार has scored a Onto goal Bellingham. beautiful goal और Turnaround he in has been leading possession. the match by Excellent far. positioning. Mbappe. Ashir has the ball in the D and loses possession once again. कोई बात नहीं आशिर भाई, मैं आपकी सपोर्ट में ऑल इन। मैं फैन बॉय बन चुका हूँ इस टाइम पे। जितनी सपोर्ट मैंने देखी है कमेंट सेक्शन में, आई एम एक्चुअली अ फैन बॉय ऑफ हाशिर भाई। टूर्नामेंट कोई भी जीते, मेरा दिल हाशिर भाई ने जीत लिया। सही बात है, सही बात है। Shout out to King Legend supporting Hashir bhai. Shout out to Nabil Zoni and shout out to Abdur Rahman for supporting Hashir bhai and Eski FX. Perfectly anticipated. Really well won. Yeah, Hashir bhai for the win. हाशिर भाई जीतेंगे बॉयज, बॉयज इंशाल्लाह, दुआ करें सब। Real moving the ball forward. What can they do from here? Can he finish? It's in. 2 to the good. That little bit of buffer, and it's just a match. कुछ कहना चाहेंगे ये सारे fans? Kylian Mbappe. बॉयज बहुत प्यारा चांस था। Still the chance might come. Bellingham. Bellingham. Finally. What a beautiful goal by Hashir bhai. Finally, finally. आशिर What a भाई beautiful कमबैक हो goal. गए, कमबैक हो King गए। Legend की prediction बिल्कुल सही साबित हुई. What a beautiful comeback. जबरदस्त, जबरदस्त। So the second half begins with Real Madrid looking to build on all the good that they did in the first 45 minutes. So we have Sarang Kiani once again. Sarang, I'm really sorry to bother you once again. एक बात पे आपको मैं थोड़ा सा दिल तोड़ना चाहूँगा कि हमारे पास इस वक्त जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, they're supporting Hashir bhai. You know, they don't care about Sarang Kiani, they don't care about the gameplay, they don't care about anything else. All they care about is Hashir bhai. तो क्या comments हैं आपके Hashir bhai के बारे में? मेरे ख्याल से हाशिर भाई भी मैच हार रहे हैं। ये आखिरी मैच लग रहा है मुझे हाशिर भाई का। तो उनके जो भी फैंस हैं, ये उन्होंने जितना भी सपोर्ट करना है कर लें। आखिरी मैच हाशिर भाई का है। यार देखो, ये बात मैंने नहीं बोली, समझ रहे हो? मैंने बिल्कुल नहीं बोली। कमेंट्री सेक्शन के अंदर ये बात ना हम सोच सकते हैं, ना इसके बारे में तखय्युल कर सकते हैं। ये बात सारंग कियानी ने बोली है। जितने भी कमेंट्स हैं ये डायरेक्ट सारंग कियानी की तरफ ही डायरेक्ट होने चाहिए। Yes, it's gonna be a very amazing match. You know, jokes apart. Next up we have Sharjeel Nasir and Adil. They have played together. They have played together in the duo. They have won. They have dominated, and they're both defending champions of GAMEINN. And now, personally, I feel like, you know, let's not say this right now. Sarang कौन है ये हारेगा? It's not Sarang, you know, it's Sarang. Saarang, as pronounced by Sarang himself. Getting into a good position. Oh, they were getting interested there, but not anymore. We've seen an eye-catching performance from Jude Bellingham to this point. A lot of eye-catching things about his game. Well, he's done well. He's been brave on the ball, always an option, but the rest of his teammates need to catch up if they're going to get back into the game. Bellingham. Using his body well to keep the ball. Play continues. Achha, Sarang, I have a question for you. You have seen, you know, such beautiful supporters of Adil. You have seen such beautiful supporters of Hashir bhai as well. You know, he's playing for top 16. अब ये basically एक ऐसा मैच चल रहा है जो कि top 8 का मैच है भी नहीं. लेकिन upon the request of all the viewers that we have, it's 3 to 4. Unreal sport, yes. So basically, my question to you is, who is, you know, praying for you? There is nobody praying for me because I don't need any prayers. My game is very good. I don't need prayers. I'm good. Thank you. What a cocky player, you know. After such a dominating turn of events, you know, he deserves to be a little bit cocky. Mbappe.
Vinicius Junior. Great chance here. And they're 3 in front now. What a performance this has been so far. Ferland Mendy. On to Bellingham. Working hard to win it back there. Real opportunity. Crucial defending. Being delivered. Well, not quite fully away here. Oh, late pass or slow getting back. Offside either way. Yeah, I think it's a bit of both. You've got to give him time to get back on side. Surely you can see what's going on. Bellingham. The ball taken away from them. Federico Valverde. Mendy. Bellingham. And he's being urged to shoot. Now, this has to be. There it is. और ये एक और गोल हाशिर भाई की तरफ से although he is losing but see I feel like a comment section के अंदर हाशिर भाई has won. He has the most fan following और बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको support किया. Thank you so much for all the commentators who have supported Hashir, and please let us know, you know. Next up we have Sharjeel Nasir and Adil Abbas, one of the best players I have seen personally. They have been winning a couple of tournaments in consistency. We have Sarang Kiani, we have Muhammad Ahmed, very recent players for top 4. So you know we have a very beautiful lineup coming forward. Boys, no doubt, Ashir bhai ka bhi situation एक और गोल. We just need one for another equalizer by Hashir bhai. Boys, listen up. एक दफा मैं उनका सबसे बड़ा फैन आने दो. मैं हूँ उनका सबसे बड़ा फैन हाशिर भाई का. और जब मैं माइक पे आ जाऊँ ना तो समझे कि टाइसन आ गया माइक पे. और अब बहुत बड़ी गेम होने वाली है. हाशिर भाई ने अब गोल पे गोल मारना है. और मैं आपको लिख के देता हूँ कि इस टूर्नामेंट का विनर हाशिर भाई होगा, क्योंकि हाशिर भाई ने मेरा दिल जीत लिया इस पॉइंट पे. एंड आई एम सो इन लव विद हाशिर भाई दैट अगर ये हार भी गए ना आज, बॉयज बहुत बड़ी स्टेटमेंट, अगर ये हार भी गए मैं पर्सनली जाके उनके साथ 1v1 खेलूंगा खुद. बॉयज मैं उनके सामने जाऊंगा, हारूंगा मैं. हारून अवान ने एक अंडे वाले बर्गर की बोली लगा दिया है. Guys, whatever you want to say it, whatever you want to call it, but you know हाशिर भाई ये टूर्नामेंट जीते ना जीते एक अंडे वाला बर्गर हारून अवान की तरफ से जीत चुके हैं. कांग्रेचुलेशंस मिस्टर हाशिर. बॉयज अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस गेम का कुछ नहीं पता तो ऐसा नहीं है, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता. तो मुझे एक बात का पता है कि हाशिर भाई इज गोना विन दिस टूर्नामेंट एंड ही इज प्लेइंग सो गुड. उनको एक जो सपोर्ट मिल रही है और बहुत सब कुछ बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह. So personally, all jokes aside, I want to thank you all for making such a beautiful, memorable event. We have been working. सुबह 8 बजे क्या है हम लोग? Exactly. We were really tired. We had no energy, but you know, you guys filled us up. हमें reassurance मिली कि you know why we started in this industry, why we want to promote this industry. You know, it's all fun and jokes, but at the end of the day, we want this community to grow. We want this fun to grow. We want this entertainment industry to grow. And you know, it's one of the best. It's one of the best industries in Pakistan internationally, if we talk about. So definitely, I would love to see the esports grow in Pakistan. Next up, we have coming up Sharjeel Nasir and Adil Abbas. What a beautiful rivalry, a friendly rivalry. Magnificent performance today. Nigh on unplayable. What are your thoughts, Sue? Hasir bhai ka interview, yes, a very well deserving interview, 100%. We're gonna ask Hashir to visit the commentary section. Please hold up.
एक निराशा की लहर इस कमेंट सेक्शन में दौड़ उठी। सो द अपडेट्स ऑन हशर भाई, बेसिकली वो अपने जितने भी फैंस हैं जिनका उन्होंने दिल जीता है वो उनके पास जा चुके हैं। ही हैज़ लेफ्ट द वेन्यू और इट हैज़ बिन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इट वाज रियली फन और इनके मैचेस देख के बहुत मज़ा आया। और अब जो मैच हो रहा है इट्स गोना बी क्रेजी। लास्ट टूर्नामेंट में आदिल अब्बास और शर्जील नासिर, they have won the tournament. Adil Abbas was the winner. शर्जील नासिर was the runner up. और अगर हम बात करें डुओस की तो दे वर पेयर्ड इन अ सिंगल टीम। और अभी भी इस टूर्नामेंट में भी डुओस में इन्होंने एक साथ खेला है। और अब जाकर टॉप 4 के इतने करीब जाकर आदिल अब्बास और शर्जील नासिर आमने सामने। लेट्स सी हू विंस। असीर, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आदिल अब्बास वर्सेस शर्जील नासिर? ऑनेस्टली आदिल क्योंकि लास्ट टूर्नामेंट्स भी जीत चुका है एंड मेरा दिल कहता है कि आदिल को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आदिल ने अपनी परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई है। बट आई एम एक्चुअली होपिंग फॉर शर्जील कि ही इज़ गोना विन इट और मे बी ही इज़ गोना आउट परफॉर्म। हो सकता है आज कुछ ऐसा हो जाए जो भाइयों के दरमियान कोई क्लैशेस शो कर दे। लेट्स होप द बेस्ट बॉयज, एक अच्छा गेम देखने को मिलने वाला है हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। Match day is upon us. Fans are pouring into the stadium. Anticipation. Welcome to the iconic Santiago Bernabeu. I'm Guy Mowbray, joined by former England striker Sue Smith on the commentary gantry, and we've got La Liga EA Sports action coming right up. It's Real Madrid, and they take on Real Madrid. Thanks, Guy. I'm anticipating a good match today. It's important they get off to a good start, play their way into the game, be confident of... Great chance here. It's a pretty good save by the keeper. This is the Real Madrid starting lineup. Thibaut Courtois is in goal. Antonio Rudiger plays alongside Eder Militao in central defence. Vinicius बहुत ही Junior इंटेंस starts with मैचअप है, as far Rodrygo as I know, in as wide far as I position, have seen and them the play. main man up front Shazil Nasser is is more Kylian of a Mbappe. possession guy. He, you know, This is keeps the the ball Real in his Madrid hold, starting take a lineup. very few but Thibaut calculated Courtois is in chances. But goal. Adil, Carvajal plays with Ferland he's a Mendy in crazy fullback machine gun position. Kelly. Federico Valverde If plays anything, he's a alongside machine gun Kelly. Aurelien So Chouameni what he in does is, midfield. as soon And as he the gets main the man ball, up front he's gonna is go straight Kylian for the Mbappe. D. He's gonna aim for the goal and shoot. No care in the world. Great defending. Mbappe. Making good progress here. Federico Valverde. On to Rodrygo. असीर, कैसा लग रहा है? दोनों ही डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो हम इस गेम में किसको कहेंगे कि हु इज डिफेंडिंग द एक्चुअल prestige of Take it on. being the winner of game? I think Adil should defend his own championship because गेमिन के अंदर उसने अपना बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया है Midfield एंड possession. स्पेसिफिकली वो अपनी Thibaut परफॉर्मेंस में again. भी बहुत ज़्यादा Now no कंसिस्टेंट है part of this game. और हम लोग देख भी रहे हैं कि काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है एंड इस टूर्नामेंट के अंदर भी उसने काफ़ी Vinicius टफ Junior. कंपटीशन दी है। और शर्जील जो है ऑब्वियसली ही इज़ द डुओ, दोनों तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझे अभी नज़र आ गया तो मैंने डाला और भी बोल दिया। Camavinga. दोनों भाई यार वाकई Ronaldo. बहुत ज़बरदस्त हैं और एंड आई रियली होप कि यार शर्जील आज कुछ नया शोकेस करे Goes on to flick बिकॉज the defender. आदिल का तो मुझे है कि ही इज़ Bellingham. गोना आउट परफॉर्म मे बी, बट अगर आज शर्जील कुछ नया दिखाता है मे बी हो सकता है एक स्वीट स्पॉट एक What a राइवलरी सी हो जाए। beautiful goal! And that is What the a save from beautiful Ter Stegen. dominating goal by Adil Abbas, 1-0. And the taking the ball lead is rolling from again. Sharjeel and proving why he's the best. मैं इस पॉइंट पे ये चाहता हूँ कि शर्जील इस मैच को ऐसे ना देखे लाइक ही इज प्लेइंग इन द ड्राइंग रूम विद हिज ओन फ्रेंड। Bellingham. आई थिंक कि यहाँ पे उसको शोकेस करने चाहिए Vinicius अपनी Junior. स्किल्स। See, as far as I have seen, the Mendy. competition is tough. No one cares. No one cares. I've seen, Awais Bellingham. playing with Saad. I've literally seen blood brothers playing against each other, and the way they play at Gaimin, they don't care about their own brother. They care about the game. They care about the title. They care about the prize pool, and they care about just dominating the tournament. That's what we are And a about. phenomenal. That's what we are Bellingham. always consistent upon. बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए Carvajal. और दोनों को अपना बेस्ट Rodrygo. परफॉर्मेंस देनी चाहिए Bellingham. एंड एक अच्छा गेम प्ले जाहिर बात है हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे।
Very nice try by Sharjeel Nasser. Ferland Mendy. Jude Bellingham. स्पेसिफिकली इस तरह के मैचेस में जहाँ पे दोनों जो ओपोनेंट्स होते हैं काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं तो उनको एक दूसरे की वीकनेसेस का काफ़ी ज़्यादा पता होता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसी स्टेक को लेके चल रहे होंगे और एक दूसरे की वीकनेसेस पे प्ले कर रहे होंगे बट लेट्स सी कि कौन अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है और कौन जो है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता बट आई कैन सी इज कि आदिल इस टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन शो कर रहा है Space out wide for Real. Which is unlikely. He's playing different. He's a man of dominance. He's a man of 7 nils, 11 nils. He's a man of nils. But if we talk about this match, this lineup, Adil Abbas versus Sharjeel, he's being very cautious because Adil ko pata hai ki Sharjeel knows his play style. Sharjeel is all about possession and stuff. He's playing totally opposite of his character, which is a very decent play in official tournaments. Mbappe. What do you think in the comment section? Is all the viewers that we have, who do you think is gonna win this match? Adil Abbas and Sharjeel Nasser, and who do you think is gonna win this tournament Antonio of Rudiger. GAMEINN? Good work to regain possession. Aurelian Chouameni. This is a promising looking attack. Vinicius Junior. And that's where it ends, with possession lost. Kylian Mbappe. Well, it's good to see कि हाशिर भाई although इस tournament में अब नहीं है, he's gone, but हमारी दुआओं में है, हमारी live stream में है, and that's what we are about. You know, we're about making memories. It's not about winning the tournament. It's not about winning the prize pool. It is something. It is a substantial amount to win, or उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ उसको अंडरस्टैंड भी करता हूँ बट पर्सनली आई फील लाइक इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी you know these players have been playing since 8 in the morning or roughly 10 in the morning Federico Valverde. so what I'm trying to say is they have consistency, they have passion, they have hard work, and what we want to promote is to provide an opportunity एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिससे ई स्पोर्ट्स ग्रो Camavinga. करे And there's the whistle, and that will do it for the first half of the half time. Madrid. Kylian Mbappe is always... The second half begins with Real Madrid looking to bounce back. Real with acres of space to attack. Bellingham. Vinicius Junior. थैंक यू फॉर योर फीडबैक अब्दुलरहमान यस पर्सनली हम एक चीज़ अगर लैक कर रहे हैं तो वो ये कि वी डू नॉट एड्रेस अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो कि अक्सर लोग हमसे करते हैं फाइनल बहुत लेट होगा 100% फाइनल लेट होगा बट द पॉइंट इज़ कि आज हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं और स्पेसिफिकली अगर हम टेकन की बात करें वी हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम लाहौर वी हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम कराची वी हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम पेशावर और 50 बंदों को एक टूर्नामेंट के अंदर एक दिन के अंदर वाइंड अप करना एंड मेकिंग श्योर कि जो आउट ऑफ टाउन से जितने भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे एक ही दिन के अंदर इस इवेंट को वाइंड अप करके चले जाएं Camavinga. it's like one of the major things that we focus on so it's Mendy. easier to make it 2 day in terms of we talk about अगर हम ये बात करें कि हमारी मैनेजमेंट के perspective में बात करें तो it's easier for us to manage a 2 day event compared to a 1 day event लेकिन just for the convenience of our players who are outsiders or out of town से जो आ रहे हैं सिर्फ उनके लिए we make sure कि we conclude all the events in 1 day no matter how much stations we need, no matter how much energy we need, personally, we have been working for more than consistently for more than 14 hours right now. इससे भी ज़्यादा. We have not slept. कल हम लोगों ने duos के tournament करवाए आज हम लोग माशाल्लाह solos के करवा रहे हैं for consistent 14 hours we have been working but still for the community for all of you we are here and we'll be back with a banger tournament once again after this is winded up. Bellingham. Oh, that's been won really smartly.
भाई हमारा अगला सोलो का जो टूर्नामेंट है, हमारे असल में डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं. सो यू नो वी प्ले इन टू लीग्स. वी ऑर्गेनाइज कैजुअल टूर्नामेंट्स जो कि ओकेजनली, मतलब हमारे तकरीबन सारे इवेंट्स लाइव स्ट्रीम होते हैं, चाहे वो कैजुअल है चाहे वो प्रोफेशनल है. बट कैजुअल टूर्नामेंट्स का ये है कि जैसे अभी आगे रमज़ान आ रहा है, वी आर गोना ऑर्गेनाइज अ रमज़ान कप एटलीस्ट फॉर फीफा. यू नो आई लव दिस कम्युनिटी, आई लव द पैसन. और अभी ये टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ, एंड जस्ट लाइक यू नो किंग लेजेंड वन. What a beautiful goal. What a beautiful equalizer by Sharjeel Nasser. I completely forgot about what I was trying to say, but what a beautiful equalizer by Sharjeel Nasser. Rodrigo. Bellon Mendy. Chance to deliver into the box. Good So pass. yeah, if we talk about the upcoming tournaments, we have Ramzan Cup uh, in the March or end of February. It's gonna be a casual tournament of FIFA and Taken. और उसके बाद if we talk about the major tournaments, we have Valorant coming up. और Valorant का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूर्नामेंट होने जा रहा है सोलो का. Yes, we are gonna organize a solo tournament in Ramzan, or probably a duo as well. We'll announce it very shortly. But as far as you know, as far as present is concerned, एक हमारा टूर्नामेंट आ रहा है मार्च के अंदर. It's gonna be GCL Season 2 GAMEINN's Champion League, and we're gonna feature Valorant with a much bigger prize pool, with a much bigger scale, and inshallah it's gonna be a national tournament. Untidy in possession there. Rodrigo. See, जैसे हमने normally मैचेस के अंदर एक चीज देखी है, it's either very dominating, it's either very one-sided, it's either very tilted toward one person. जिस पे हमारे recently कुछ comments भी आए थे कि it's fixed क्योंकि 7-0 पड़ रहा है. But if we talk about this match, they know their gameplay. Sharjeel knows Adil, Adil knows Sharjeel. But if we see the scores, it's 1-1. What a beautiful equalizer by Sharjeel Nasser. But once again, here we are. What do you think about this? 100%. इफ यू टॉक अबाउट के जब एक दूसरे के जब दोस्त आके आप ओपोनेंट बन के सामने खेलते हैं, तो आपके साथ वही सेम स्ट्रेटजीज नहीं चल सकती, आपके वही प्रीवियस प्लान काम नहीं कर सकते. जिस चीज़ पे आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो चीज़ें काम नहीं कर सकती. आपको एक न्यू रूम के अंदर एंटर होना पड़ता है, अपने आप को कंफर्ट से थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ता है. सो आई गेस के शर्जील इसी तरह से कुछ प्लान करके आए होंगे, आई होप सो. और मे बी ऑन स्पॉट भी कुछ प्लान्स कर रहे होंगे एट द मिड ऑफ द गेम. एंड व्हाट आई वांट टू सी इज कि इन दोनों के दरमियान एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए. मैं ये नहीं चाहता कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक स्वीट स्पॉट सा लेके चल रहे हो. मैं इनके दरमियान एक स्वीट सी राइवलरी भी देखना चाहता हूँ. See, I just saw the comment section. It's too much possession by Adil. We have been talking about this. This is not Adil. Adil does not play like this. But if you see the defense, Sharjeel Nasser is absolutely banging on defense. Look at the white shirts. In the D, you can see 5 players or approximately 6 players in the D. He is playing very defensive. Vinicius Junior. Promising ball. Oh, he tried to It could power be. it It could in. be. But It he could be extra only time. It just could short of be, the key. penalties as well. Let's see. Let's see what happens. Camavinga. Carvajal. Bellingham. We are so close to the conclusion. Once What again a a goal. beautiful goal. What a beautiful goal. So little
Adil has scored a goal और इसी के साथ ही ये मैच बहुत खूबसूरत मैच बिल्कुल लास्ट मिनट पे कंक्लूड होता हुए आदिल 2 शर्जील नासिर 1 और yeah we can see the support we have for Adil. Rodrigo. Surely the equaliser. And it's in. The goal to get us back to level pegging. So we have Adil Abbas in the comment section. Adil, you just won the match against your own friend. How does it feel like to betray your own friend? बिट्रे नहीं किया मैंने, बिट्रे किया भाई आपने, उसको पूरा पूरा चांस मिला था भाई, उसने फिनिश नहीं किया. Okay, so for all the participants, Adil Abbas has won the match and he has qualified for top 4. So congratulations. Congratulations Adil, and inshallah we'll see you again on the top 4. फिर अब क्या करना है?
heading for what's sure to grab the interest of football fans around. A warm welcome from the Spanish capital. Guy Mowbray here for commentary with Sue Smith alongside me. And we've got La Liga EA Sports action coming right up. It's Real Madrid, and they take on Real Madrid. Thanks, Guy. Well, and Mbappe. Okay, so we have Sarang and Mohammad Ahmed playing a... 1-0. What just happened? Underway at 1-0. What just happened? Let me confirm. Mendy. Eder Militao. Now Carvajal. And it's been cut out. There's the turnover. Aurelian Chouameni. Now Carvajal. Switched on and ready to intercept there. Space now to get a crossover. Oh, they've lost it. And the attack is over. Really good defending. So everyone, this is the update. Before we could even set up the stream, Sarang has scored a goal. Valverde. Yes, Sarang has scored a goal. Matlab, we could not even set up the stream, you know. We did not even write the names of the participants that we have for. By the way, this is winner final of the tournament or Sarang ki game. It's actually insane, you know. It's actually insane. The dominance, it's beyond words, you know. I have never seen anyone play like this. We have a couple of very decent players, you know. If I were to name them, it's Adil Abbas, it's Sardin Nasser, it's Mohammad Ahmed, the guy that he just scored against. We have, you know, Yusha. Kidero Yusha, it's been, you know, a couple of events that I have not seen you. Or what just happens? What just happened? Another goal by Sarang. Once again, just dominating the game. And I feel like, you know, personally, I feel like he match fixed it. You know, if I were to, you know, just be at home, chilling, relaxing, I would say game has been fixed. Or he is definitely dominating, yes. He's a very, you know, cocky player. I have seen players who are very decent, who have very insane gameplay, but they are very down to earth. They are very, you know, calm and collected about their gameplay. But Sarang is an absolutely, you know, he just does not care. He just does not care. He's cocky about it. He knows his gameplay. He knows the dominance. He knows the skill that he's got. He's just absolutely killing it. Forward-thinking pass. Skills तो है. You know, we could all agree कि सारंग के पास skills They looked encouraging, but good defending to snuff out any threat. Rudiger. Aurelian Chouameni. On to Valverde. Well, they have the lead, and they're happy just to play keep ball. Mbappe. Bellingham. Well, what a place to lose the ball just when the chance was on. Rodrigo. Antonio Rudiger. Pass was read and the ball has changed hands. Now there could be a real chance developing. He's drifting into a useful position here. Nice bit of defending there to put it out for a throw. Sarang के आज जितने भी मैचेस मैंने देखे हैं. Okay. By the way, if I were to mention his score throughout the tournament, okay, let's go for Sarang. Mbappe. Let's see what he has scored. Well, he's lost the ball, and any chance has gone. He started with 6-0. Mendy. He was 3-2 against Adil Abbas. He was 7-1 against Mohammad Awais. Bellingham. And now he's playing against Mohammad Ahmed. And this is not even the group stage. Let's talk about the group stage. The crowd urging him to shoot. Sarang Kiani.
Struggling to keep the ball there. Excellent work in goal there. Well saved. Mbappe. Scored 3-1 in his first qualifier match. Scored 4-1 in his second qualifier match. Rodrigo. Now the rest is history. Final stage score. And able to come away with the ball. Moving it forward with purpose. Something on maybe. Yes, we could actually ask him to, start up a coaching session. और हम लोग ये चीज़ ऑफर भी कर रहे हैं. You could actually, if you want to improve your gameplay, कोई भी गेम अगर आप improve करना चाह रहे हैं, if you want us to coordinate with professional players, we have a ranking of players who could just, we could hook you guys up. और आप उसी तरह से तरतीब बना सकते हो, उससे आप अपना गेम प्ले improve कर सकते हो. Mostly, we have clients for Valorant, Dota, CS2, FPS games mainly. But yes, we have really decent players in Tekken as well. We have Hafiz Zadil, we have Dawood Sikandar, international icons. और similarly अगर हम FC25 की भी बात करें या FIFA की भी बात करें, so they are very decent players. और माशाल्लाह the way, I never heard this guy's name, Sarang. और आज सबके नामों पर Sarang है. Every guy who has lost to him, it's just like Hamza Ghazi all over again. He came from Peshawar, he conquered the tournament, and he was, I guess, the worst score that he had in the tournament was 11-0. 11-0 was his worst score in the tournament. So, Sarang is one of the competitors. Inshallah, we would love to see Hamza Ghazi and Sarang one-on-one in the next upcoming tournament. Real Madrid have a lot to do in this second half, and much of it needs to be better than they've shown so far. Jude Bellingham. Kylian Mbappe. The ball is lost, and the chance has gone too. Vinicius Junior. Bellingham. Bellingham! That has stopped any potential danger. They'll be able to get it away now with a goal kick. Bellingham. Real Madrid come away with it. Mendy. Terrific. Another goal. What a scoreline this is for them. Another goal. Jude Bellingham. So by the way, if we talk about Mohamed Ahmed, he placed third in the last row. He is actually a king of comebacks. I'm not saying he's going to make a comeback against Sarang. It's really difficult. The time is not on the low. He has less than 30 minutes to score a goal or something. But still, if we talk about Mohamed Ahmed, he's a very consistent player as well. It's not some amateur player जिसके against Sarang इतना अच्छा score कर रहा है. 3-0 is a very decent score. But specifically 3-0 against Mohamed Ahmed is a very phenomenal score because he's a very, very phenomenal player. You have seen his matches, top 8 के matches. Good work to recover possession. Rodrigo. Danny Carvajal. And the shot caught it. Something different from the corner. Rodrigo. Decent delivery. And the danger is cleared. Mendy. Bellingham. And it's opened up. Well, it looked promising, but it hasn't proved to be much of a test. Let's see who wins. Militao. Let's see who wins this tournament and gets the title of defending Jude Bellingham. It means something. It means Lovely something to us. It means but a lot to the goal participants. wins the race to the ball.
not sure when. Mendy. We have been trying for the last 3 years. You see, Bellingham. how about we share our story? Real with How width about we here. share what Gaming is all Slivered into about? the middle. Well, it did look good. So मैं did the जब goalkeeper in इसको claiming मैंने it. एफपीएस Played their way into किया था danger here. एंड बीइंग वेरी And the ball ऑनेस्ट is बहुत claimed. सारे अप्स एंड Secure लोज आए हैं goalkeeping हमारी there. लाइफ के अंदर एंड रिगार्डिंग हमारी स्पोर्ट्स कंपनी के Federico Valverde. हम लेकिन एक चीज़ पे हम लोग हमेशा कंसिस्टेंट रहे हैं दैट वाज कि हमने कम्पिटिटिव गेमिंग को Kylian पाकिस्तान Mbappe. के अंदर इंशाल्लाह बहुत A इनहेंस little करना sloppy on the है ball एंड there. व्हाट आई कैन से दैट वो ये है कि यार हमने इस कम्युनिटी को एटलीस्ट इतना ज़रूर मैच्योर किया है कि यहाँ पे हम लोग एक अच्छे टूर्नामेंट्स लाइक इन competitive environment organize कर Vinicius सकें और एक Junior. अच्छा गेम प्ले हम लोग शोकेस कर सकें और हमें कुछ ऐसी न्यूज़ भी देखने को मिल रही हैं जहाँ पे हमारे पास पंजाब की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से ई स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे इनिशिएटिव किए जा रहे हैं एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सक्सेस Which is really Rodrigo. nice, which is really nice. It feels like Mbappe. एक खड़े पानी के अंदर पत्थर फेंक है और एक लहर चली है माशाल्लाह और it started with PP government. There's a chance for them to You know, go I'm now. not being political. I'm just saying कि सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था माशाल्लाह. It was great initiative. That's nice और and माशाल्लाह easy for the पंजाब गवर्नमेंट goalkeeper. की तरफ से एक इंडस आई वीक के नाम से टूर्नामेंट हो रहा है. By the way, Vinicius please Junior. register for the इंडस आई वीक. हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की ई स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ग्रो करें, ई स्पोर्ट्स का जो Sloppy टैलेंट in है वो ग्रो possession. करे. And personally, what gaming is all about is promoting e sports. How do we do that? For अभी मेरे सामने लिखा हुआ है हमारा मिशन, हमारा विजन, because that's what we see, that's And what we unable breathe, to retain that's possession. what we live by. And if I were to quote you exact word to word is to promote international standards of esports in Pakistan, to organize and execute esports tournaments Little and careless there cosmets, as the ball to changes shortlist hands. and rank top players of Pakistan. इसका मतलब Rodrigo. क्या है? इस रैंकिंग का मतलब क्या है? डिफेंडिंग चैंपियन का मतलब क्या है? The defending champion Well, has nobody a seems to want to possibility keep the of ball being for long here. sponsored by GAMEINN or other potential sponsors जो कि e-sports player Bellingham. को hire करना चाहते हैं, जो उनको promote करना चाहते हैं, उनको sponsor करना चाहते हैं. So being the defending champion of GAMEINN gives you the opportunity to get hired by GAMEINN or Mbappe. other partners or other sponsors. By the way, Sarang is winning. Sarang is Rodrigo. dominating the tournament by far, and he's Delivered into also the box. dominating the And match that's as well nicely by won to 3-0. see off the threat. Mohammad Ahmed 0 and Sarang 3. Mbappe. So as I was saying, players like Sarang, players like Adil, players like Mohammad Ahmed, That's one out he's of a very play. consistent Throwing to player. come. They deserve to get sponsored. They deserve to get recognized for their Oh, goodness initiatives, me, for he's had a their shocker with that throw. efforts. Well, that brings the match to a close. A frustrating day. अच्छा तो everyone we have Sarang over here. Sarang आपके नाम के spellings ठीक हैं, आप देख लें एक दफा. आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं. So he's been complaining कि इसके नाम के spellings ठीक नहीं थे, but you have done that. Sarang, how does it feel, to be in the top two? Mashallah, you have won the duo. और अब आप singles के अंदर भी top two के अंदर हैं, तो how does it feel to be It feels great. काफ़ी काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी मुश्किल गेम्स थी. I would also like to thank Sohail Khan and Harun Awan. I love them. My fans. 100%? They have been, Harun has been asking for. Sarang, would you like to, teach someone if they were to ask you कि यार हमें game सिखाओ? जी Coaching provide कर सकते हैं आप? I would love to. अगर इन्होंने मेरे से गेम सीखनी हो ये आप लोगों को वो कहते हैं इंस्टा पे DM मैं फ्री हूँ हाजिर हूँ. So, Harun, we have Sarang on board. If you would love to, improve your game,
तो आप आ सकते हैं गेम इन एंड विल वेलकम विल वेलकम सारंग और इंशाल्लाह यू कैन improve your gameplay as well. Now we have okay, so next up we have coming up Adil, Abbas and Shahriyar. और इन दोनों में से जो भी जीतता है is gonna play against Mohammed Ahmed and the winner of the next match is gonna be qualifying for the finale. और मेरे साथ हैं शर्जील नासिर. अस्सलाम वालेकुम शर्जील. वालेकुम सलाम. अरे भाई क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र. आप सुनाएं कैसे हैं और आप बताएं सबसे पहले ये कि आदिल अब्बास और आपका मैच कैसा गया और आपको पर्सनली कैसा फील हुआ है कि यू बोथ ऑफ यू गाइस वर द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ गेम इन और माशाल्लाह द वे यू गाइस हैव शोन कंसिस्टेंसी और माशाल्लाह इस लाइनअप में भी यू वर इन टॉप 8 टॉप 4 माशाल्लाह. तो कैसे लगा एक दूसरे के अगेंस्ट आना और हाउ वाज इट लाइक टू प्ले अगेंस्ट योर ओन डुओ?
ऐसे ही है असल में। अब हमारा तो बहुत अलग सीन है ना दोनों का, क्योंकि हम दोनों आपस में इकट्ठी प्रैक्टिस भी करते हैं और ये सीन भी है एक किस्म का हमारा। एक ये फ्रेंडली ही था, जैसे हम वैसे कैजुअली खेलते हैं, तो क्लोज मैच था। मतलब हम दोनों को एक दूसरे की चीजें काफी शरील, मैं पता थी। आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि दिस वाज नॉट फ्रेंडली, दिस वाज वेरी इंटेंस। हमने वो इंटेंसिटी देखी है, वो इंटेंसिटी ऑडियंस ने देखी है। और माशाल्लाह जिस तरीके से आप लोग, बहुत ही इंटेंस और क्लोज मैच आप लोगों को गया है, तो यू गाइस वर गिविंग योर एब्सोल्यूट बेस्ट। पोजेशन ये बात शो कर रहा था, जिस तरह से आप लोग गोल्स की ट्राइज ले रहे थे, उससे ये बात अंदाजा हो रही थी कि हाउ मच यू गाइस आर ट्राइंग टू विन दिस टूर्नामेंट, win the game. So, you cannot say कि it was a friendly tournament, guys, it was casual, but it was a very decent tournament, mashallah. ऐसे ही है टूर्नामेंट तो ऐसे ही है। जब आप किसी टूर्नामेंट में खेलते हैं तो जब आपका अपने दोस्त के साथ, क्लोज दोस्त के साथ मैच आ जाता है, तो फिर उसमें ये है कि आप अपना 100% देते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक फ्रेंडली तो कोई नहीं खेल रहे। तो लेकिन This is उसमें the ये Real होता है कि Madrid हम दोनों को starting एक दूसरे lineup. की चीज़ें पता Thibaut थी, ठीक Courtois है। is तो in goal. Carvajal बस यही है, plays अपना with बेस्ट दिया Ferland दोनों ने, Mendy in the fullback और यही था positions. क्लोज मैच गया Rodrigo काफ़ी। तो plays बस with अब Vinicius ये है कि Junior in the वो wide जीत गया, positions, मैं हार and the गया, तो main ऐसा man ही up सीन है। front is Kylian Mbappe. माशाल्लाह माशाल्लाह, अंगूर बिल्कुल खट्टे नहीं है। शर्जील नासिर इज वेरी हैप्पी कि आदिल अब्बास माशाल्लाह This is the क्वालीफाई कर Real रहे हैं आगे। Madrid starting और आई lineup. होप शर्जील कि Thibaut आप Courtois आदिल is in अब्बास को goal. ही शिप कर रहे Carvajal plays with हैं Ferland Mendy in इन the fullback आदिल अब्बास positions. वर्सेस Vinicius शहरियार। Junior starts और with Rodrigo in the आगे wide मैं भी कुछ नहीं positions, कह रहा, and लेट्स the सी हाउ main द man up मैच front गोस। is Kylian Mbappe. ऐसे ही है बिल्कुल ऑब्वियसली। आई थिंक अगर मैं एक साइड ना भी लूँ तो वैसे भी आई थिंक आदिल को थोड़ा सा एज Camavinga हासिल है इस onto FC25 Valverde. में, आई वुड से, Real क्योंकि Madrid शहरियार trying to भाई get को भी things मैंने moving. एक दो टूर्नामेंट्स में देखा हुआ है इनकी गेम प्ले को। सो And they want to लेट्स सी। see a लेकिन shot कुछ कह here. नहीं सकते, फीफा में आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। आपको Camavinga. रीबाउंड्स बोल के दूसरे का गोल निकल आता Vinicius है, लेकिन Junior. देखते हैं, लेट्स सी हाउ दिस मैच गोस। Rodrigo. 11 मिनट्स इस टाइम पे गुजर चुके हैं और स्कोर 0-0 Well, है। it's no दोनों टीमें surprise to काफ़ी जो see है who वो we've picked out to have a पोजेशन look at बेस here. Jude Bellingham फुटबॉल being खेल talked रही हैं। about by everybody. What can we expect to see from him in this one? सब शहरियार के Yeah, पास he's बॉल so efficient in front of goal. Whenever a chance comes his way, he at least स्टील tests किया the विनी जूनियर goalkeeper. ने। The defence are आदिल going ऑन to द have to अटैक, remain यहाँ focused पे for एक the अच्छा full चांस 90 बन minutes सकता था, because he only needs लेकिन one chance ओवर and रन he'll कर गया punish you. बॉल। ये काफ़ी अच्छा चांस था, आई वुड से। Rodrigo. Now Carvajal. Jude Bellingham. अच्छा, मैंने देखा शहरियार भाई Vinicius मॉडरिच को Junior. खिला रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ऑफ Kylian सीन Mbappe. है। मतलब बाकी आवाम यूज़ नहीं Real करती एज अ pushing कैम forward with इनको, options available. और ये उनको सेंटर मिडफील्डर में खिला रहे हैं। आई वुड से Jude डिफेंसिवली शायद Bellingham. इनको मसले होंगे, बट लेट्स सी उनके क्या गेम प्लान है। Federico Valverde. Onto आदिल Rodrigo. अब यहाँ पे सुकून से बिल्डअप करेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे। Eduardo Camavinga. Good work to recover possession. Mbappe. Vinicius Junior. अच्छा डिसीजन नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे आदिल के पास चांस, लेकिन Now Carvajal. Shazil, if I were to ask you as an amateur player, I have Rodrigo. absolutely no idea what FIFA is all about. I mean, I Rodrigo. respect the game, you know. आप लोगों की माशाल्लाह बहुत अच्छी कम्युनिटी है, probably one of the best Rodrigo. communities we have in Islamabad, mashallah. But if I were to ask you a simple question, कि on the level of difficulty, Valverde. how much rank do you To feel edge like ahead. FIFA का आता है in terms of difficulty? That is it a very And a difficult game? great Is it a stop very to turn the ball away. complex game, or is it, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ हर Jude नए Bellingham. एफसी का जो जैसे FC24 से relatively easy थी Vinicius with the Junior. addition of AI and stuff, तो 26 भी relatively जितने मजीद फीचर्स के अंदर आए गए And हैं, it's been cut out. would you There's say the कि turnover. FC What a is getting chance here. easier to play, or is It's in. Deadlock broken. या सो ये एक Just बहुत how ही crucial अच्छा could टॉपिक that है, prove to be? लेकिन इससे पहले आदिल ने यहाँ पे गोल स्कोर कर दिया है। The action 1-0 underway once more. to And the आदिल। onus is on Real to 28 find a minutes response. on the score, so Ferland Mendy. Adil has the breakthrough, so let's see Onto how Valverde. Sharia responds to that goal. So अच्छा, वापस आपकी बात पे आते हैं, तो Bellingham. उसमें ये सीन है कि जो फीफा है ना, Mbappe. वो एक बहुत ही मैकेनिकल Real गेम है। Madrid regaining possession. मतलब इसमें आपके पास एक
ये इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। Well, under no मतलब real आप ऐसे pressure, but कहें कि unable आज to मैं keep it in स्टार्ट करूं play. और 1-2 महीने में मैं एक मतलब प्रो प्लेयर या उस तरह का सीन सारी Mbappe. चीज़ें मुझे पता चल जाएं और वो मैं यूज़ करूं, That तो will वो keep the काफ़ी जो attack है ना moving मुश्किल है। nicely. मतलब But ऐसा it's been सीन नहीं है given as जैसे मतलब offside, the बाकी timing just out. गेम्स में Well, होता है ना, Holmes has वैसा run well, and फीफा I को thought आपको he was टाइम देना in. पड़ता है। शर्जील, Nice आप and मुझे weighted ऐसे pass बताएं कि too, but प्रोफेशनल सीन he's के अंदर ऐसी offside by the कौन सी गेम है narrowest of जिसके अंदर आप margins. 2 महीनों के अंदर प्रोफेशनल सीन में जा सकते हैं? Mbappe. Oh, good defending, प्रोफेशनली just when वैसे it was मैंने looking threatening. बाकी गेम्स को एज सच जो है वो इतना वो नहीं देखा। लाइक मतलब मैं अब कंपैरेटिव अगर देखता भी हूँ तो मैं फीफा को ही देखता हूँ। एफसी प्रो होता है ऑन द ग्लोब स्टेज, तो वो सीन है। Luka लेकिन Modric. हाँ, वो तो ऑब्वियस है किसी भी गेम में। आई डोंट थिंक सो कि आप बगैर 1-2 महीनों के अंदर आप जो है Working वो इस hard लेवल to पे नहीं win it पहुंच back सकते कि there. आप जो है वो कंपैरेटिव जो है वो शर्जील, गेम्स को हमारे देखें। टॉप फैन मोहम्मद रहमान आपसे 2 सवाल पूछना Jude चाहते हैं। Bellingham. ठीक है, तो दिस इज नॉट मी आस्किंग दिस क्वेश्चन, दिस इज अब्दुल रहमान आस्किंग Now यू। there might be a शर्जील chance as से they keep it हाशिर भाई का moving. पूछूं। शर्जील, व्हाट डू यू थिंक अबाउट Advantage द played, हाशिर no भाई? free व्हाट डू kick. यू थिंक अबाउट द फैन फॉलोइंग दैट ही हैज, और जिस तरीके से इस Bellingham. ऑडियंस ने इनको सपोर्ट किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सच ग्रेट Now सपोर्ट एंड Carvajal. एंथुसियाज्म बाय द Options सपोर्टर्स? available in the middle. अच्छा, तो अगर मैं आपको स्टार्ट से बताऊं, लाइक हाशिर भाई को Rodrigo. आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम इस Vinicius टूर्नामेंट में देखा Junior. है। आई वुड Vinicius से Junior. पहले आई डोंट थिंक सो Well, इनको मैंने maybe that's a किसी रीसेंट misconnection with टूर्नामेंट the में ball. इन It's द पास्ट well ईयर और सो wide. इनको मैंने देखा है। क्योंकि अगर ये एक अच्छे प्लेयर होते और ये किसी Federico Valverde. टूर्नामेंट में आए होते तो ऑब्वियसली मैंने इनको रिकॉग्नाइज किया होता इस टूर्नामेंट में। लेकिन उस हिसाब से अगर उन्होंने इनका ये पहला टूर्नामेंट था तो उस हिसाब से आई वुड से Over इनकी the गेम बहुत byline it अच्छी है। goes. It'll be a corner सो now. इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखी भी होंगी अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करने के लिए, जो And चीज़ें it's a ये short one. लैक कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आई वुड से अगर फर्स्ट टूर्नामेंट था तो उसके हिसाब से टॉप हिट आना Rodrigo. एक बहुत ही अच्छी जो है वो चीज़ है। तो Vinicius Junior. इंशाल्लाह आने आने वाले दिनों में Modric. नेक्स्ट टूर्नामेंट्स में वो मज़ीद अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करेंगे और आई They've वुड से lost it there, and the attack is कंपेरेट over. कंपटीशन देंगे आजकल की जो And on that whistle, लोग the first डोमिनेट कर half रहे हैं comes to an फीफा end. में। Shazil, if I were to share the competitive nature of all the tournaments in Yemen, Real Madrid behind then as the I'm really second half surprised. I have starts. seen They haven't people been able to climb respond up in the from next top 45 32 to minutes. top 3 in 6 months. I've Bernard seen Mendy. people do that. Actually, I've seen people do that Mbappe. in FIFA. I've Moving seen the ball people do well that here, looking in to extend the Taken. lead. I've seen people do that in Valorant. Rodrigo. Last time, one of the craziest things happened at GAMEINN League. Valorant का tournament था, और Vinicius if Junior. if I were to talk about the ranking system, तो it's like top of the line immortal players, ठीक है? और उनके against, do you know about the Valorant ranking system? This is a उनके positive looking against move. there was this team which was silver and gold, 5 Bellingham. stack versus Can he finish? immortal 5 stack. Guess करें उनका Rodrigo. score क्या होगा? It's in. Two to the good. सिल्वर और That मॉडल little का तो bit of कंपैरिजन ही buffer. नहीं है मेरे ख्याल से। मतलब अगर वैसे मुझसे पूछें तो क्लीन स्वीप किया होना चाहिए इमोर्टल। और मैं अगर आपको ये बताऊं कि उस मैच का स्कोर था 11-13, इट वाज सो क्लोज टू यू नो एन इक्वलाइजर, और मैच जो एक्स्ट्रा टाइम पे जा सकता था, बट दे मेड अ कमबैक And एंड it's just द a matter सिल्वर of टीम keeping स्कोर्ड concentration 11 now. राउंड्स अगेंस्ट द इमॉर्टल प्लेयर्स. They were really scared. Valverde. I've seen their faces. I've seen their faces. They were Now legit Modric. scared कि एक immortal lobby हमारे टूर्नामेंट के अंदर एक सिल्वर लॉबी से हार रही है. तो this is how the esports Vinicius Junior. organization works. ये esports का सीन है. Gaming is very Could unpredictable. pull one back आपने भी here. आज मल्टीपल गेम जैसे देखे होंगे जिनके अंदर Well, आपको the बिल्कुल effort अंदाजा नहीं never होगा really how this looked is like going to turn troubling the out. goalkeeper ठीक है, at all. आप Poor फॉर attempt in the एग्जांपल end. आप अपनी पोजीशन के अंदर बॉल को रख रहे हैं, यू वांट टू स्कोर अ गोल, आप बहुत अग्रेसिव खेल रहे हैं, यू हैव नो आइडिया कब रिबाउंड के ऊपर आपको खुद बॉल रुक Danny सकता है. Carvajal. तो इट कुड गो both ways. Vinicius So Junior. this is the beauty of esports, this is They the need to be beauty of better on the gaming, ball than and this that. is beautiful beauty of organizing such beautiful tournaments. और बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज करके. बिल्कुल ऐसे ही है। और भाई Looking हमें to भी put the बहुत cross खुशी होती in. है जब हम इस तरह के टूर्नामेंट्स देखते हैं ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं इतने Bellingham. अच्छे तरीके से। ठीक है, आई वुड से Good patient बेस्ट build up, but not quite the end टूर्नामेंट्स product. हैपनिंग इन ट्विन सिटीज। ठीक है, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई कंपैरिजन कर सकता है कोई और It's all जो है वो getting a एंटिटी bit इस टाइम पे। scrappy in the middle right now. और यही सीन है, आपको Real मतलब moving the ball forward. What बहुत can they do from here? इंजॉयमेंट मिलती है, And आपको that's a shame डिफरेंट for them. टाइप ऑफ Nothing प्लेयर्स doing. मिलते हैं। ठीक है, और वो एक ऐसी चीज़ें कर रही होती हैं जो कि एक सरप्राइजिंग होती है।
ये एक्सपीरियंस और उस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं उनको वो बीट कर रहे होते हैं, तो फिर जो है वो काफ़ी मज़ा आता है उस चीज़ में, बहुत ज़्यादा। आदिल 3-0। आई थिंक सो इस टाइम पे ये मैच जो है वो क्लोज हो चुका है, 63 मिनट्स हो चुके हैं, 3-0 स्कोर है, तो आई वुड से आदिल इस टाइम पे इजीली लूजर्स का फाइनल खेलेंगे मोहम्मद अहमद के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा मैच होगा। और एक और आपको मैं फैक्ट बताता चलूँ कि कंपेटिटिव गेम टूर्नामेंट्स में अभी तक आदिल अहमद से नहीं हारा, और ये मे भी आज चेंज हो, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये एक फैक्ट है। Well, it's surprisingly good because if we talk about Mohammad Ahmed, he's a very decent player. Consistently, he has been, scoring top 3, top 4 in our, और बहुत अच्छा खेलते हैं माशाल्लाह. But at the same time, Adil is very great और माशाल्लाह यही चीज़ देख के बहुत खुशी होती है कि all the participants in the top 4, in the top 8, they are extremely phenomenal माशाल्लाह. और that was the reason that we live streamed these events. ये basically इन memories को save करने का एक तरीका है. This is, our legacy that we did this, we had this, time together, these moments, और इनका आपके पास एक history होनी चाहिए. Whenever you feel like going back to this time, it's अभी तकरीबन 1 बजने वाला है, it's 25, और by the way आज हमारा टेकन का टूर्नामेंट भी है in less than 9 hours. तो wishes the best of luck for that as well. और but everything is insane. The gulab jamuns are insane. और यहाँ पे आई थिंक पेनल्टी मिल गई है आदिल को. यस, इज इट गोना बी 4-0 और इज इट गोना बी सेव? विनी जूनियर सेंटर में मारते हुए 4-0. और भाई ऐसे ही है, एट द एंड लाइफ में आपको मेमोरीज ही रह जाती हैं, जिन चीज़ों को आपका शौक होता है, एट द एंड आप वही चीज़ें जब आप देखते हैं तो वो आपको एक मतलब काफ़ी खुशी होती है. तो इस तरह की चीज़ें जब इंसान बाद में देखता है तो यार वो अपनी काफ़ी, आई थिंक ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है जो आप लाइव स्ट्रीमिंग और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उससे बेस्ट है. This year, Zeal, 100%. I'm a big fan of memories. I support it. I believe in living the present. और 5-0 आई थिंक क्लीन शीट यहाँ पे आदिल की आदिल ने सारा गुस्सा शहरयार पर उतार दिया. 100%. I feel like अमूमन हम predictions personally नहीं देते, लेकिन I feel like Adil is getting prepped for his finale with Sarang. ठीक है, let's see how the match goes with Mohammad Ahmed as well, but this is what we are predicting, to see the finale of Adil Abbas and Sarang Kiani, and let's see who wins. Sarang is a very cocky player, and for all the right reasons, as the comment section have mentioned. But Adil Abbas is a very decent player, mashallah. He's a very, humble, down-to-earth guy and very focused, tunnel vision guy. He knows how to play with the mind because he has the experience. If Sarang has the opportunity of being, an underdog, एक ऐसा player जिसका, play style का इतना नहीं पता, game play का इतना नहीं पता, so at the same time, Adil Abbas has the experience of winning this tournament as well. He has the legacy of winning these tournaments, and he has the legacy of bearing that stress, bearing that pressure under the right moments. So we can see what happens in the finale, inshallah. And right now the score is Adil Abbas 5 and Shahriyar 0. ऐसे ही है, और आई थिंक जस्ट 1 मिनट रह गया, वी आर गोइंग टू सी द फाइनल अहमद वर्सेस आदिल. लेट्स सी हाउ दैट गोस. सी यू सून. There we are, full time here, and it's Real Madrid who will go home happy, having taken all the points. Well, that was really comfortable, wasn't it? The play going
SoundCloud driven. So we have Shahriyar over here, mashallah. What a brilliant performance. One of the top four contenders of Battle of Ice Chapter 3. Shahriyar भाई कैसा लगा आपका experience कैसा था? And how is it like to participate? You're here once again. आप इससे पहले भी आ चुके हैं. बिल्कुल मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम और आई थिंक ये वाला ज़्यादा अच्छा था उसकी वजह ये थी कि एक तो ग्रुप थे और उसके अंदर दो चांसेस थे और फिर फाइनल्स में भी आपको एक लूज़र ब्रैकेट का चांस मिल रहा था तो आई गेस अभी तक का मेरे ख्याल में सबसे अच्छा टूर्नामेंट था और ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छा किया और वेल ऑन टाइम था हर चीज़ क्योंकि 10 बजे स्टार्ट हुआ और 2 बजे ग्रुप बी का स्टार्ट हो गया था मतलब तकरीबन तो ये I'm glad, mashallah, आपकी performance compared to as I've seen you play before, it has improved a lot, mashallah. और क्या क्या इसका नुस्खा क्या है क्या आप कर रहे हैं? असल में प्रॉब्लम ये होती है फर्स्ट मैच में पता नहीं क्यों हार जाता हूँ तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं फर्स्ट मैच हार गया था अभी इस दफ़ा मैं फर्स्ट मैच हार गया था तो इससे पहले भी मैं दो टूर्नामेंट जीत चुका हूँ यूनिवर्सिटी में एक था वो जीता हूँ और मतलब लेकिन अब ये था कि ज़रा स्टेबल हो गया था कुछ टाइम में माशाल्लाह मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ असल में जितने भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको अपना एक मोमेंटम बिल्डअप करने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है अपने वार्म अप करना होता है सारा कुछ एंड स्टफ लाइक दैट और मैं इस चीज़ को 100% रिस्पेक्ट करता हूँ congratulations on being on the top 4 mashallah और it was really lovely to have you here and I will see you in the closing ceremony now बिल्कुल थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच have a nice day थैंक यू What a game we have in store for you today. The hype has been building.
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक। और माशाल्लाह अभी हमारा लूज़र ब्रैकेट का फिनाले है। उसके मैच से पहले अभी हम लोग असल में अपनी क्लोजिंग सेरेमनी कर रहे थे। वी वर जस्ट मेकिंग सम पिक्चर्स ऑफ टॉप फोर पार्टिसिपेंट्स और वी विश ऑल ऑफ देम अ वेरी बेस्ट द वेरी बेस्ट ऑफ लक। और कुछ क्वेश्चन है, लेट्स आंसर देम। FC26 का टूर्नामेंट, अच्छा ब्रो, लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चंस कि हमने FC26 क्यों नहीं करवाई। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे पास FC26 तब से है जब FC26 ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुई थी। लाइक वी ऑर्डर्ड इट ऑन प्री लॉन्च। और हमारे पास लॉन्च से भी 2 से 3 दिन पहले से है, हमारे पास तब से लोग आ रहे हैं, खेल रहे हैं और दे कैन एंजॉय इन द गेमिंग जोन। But at the same time, if we talk about FC26, it's not a stable game. It crashes randomly. और that was the one of the reasons कि हम लोगों ने FC26 नहीं करवाई, क्योंकि the way we organize events, the way we go for you know the structure, the format and the live stream specifically. तो for example अभी हम लोग live stream कर रहे हैं और आपके सामने randomly एक game crash कर जाती है, what would be the image? तो that was one of the reasons जिसकी वजह से हम लोग FC26 के ऊपर नहीं गए। और it's not just with us. I have multiple people have contacted और सबके पास ये इशू आ रहा है। और बेसिकली इशू ये है कि लाइक FC26 is a new game relatively, so the PS5 variant on PS5, it works absolutely fine with PC, it works absolutely fine with PS4, लेकिन FC26 का जो PS5 वेरिएंट है उसके अंदर एरर है। एंड you can just check the Reddit। और मल्टीपल टाइम हमारे मतलब यहाँ पे हम लोगों ने और भी टूर्नामेंट्स अनाउंस होते हुए देखे हैं, हमारे बिल्कुल पैरेलल FC26 टूर्नामेंट्स हुए हैं। वन ऑफ द रीजन कि हम लोग FC26 की तरफ नहीं गए वही कि इट्स नॉट अ स्टेबल गेम एज ऑफ राइट नाउ, एटलीस्ट नॉट ऑन PS5। तो वी वांट टू create a very good impression of esports, and we want कि जो भी हम लोग टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करें वो हमारी ई स्पोर्ट्स की कम्युनिटी की अच्छी डिपिक्शन करती हो। तो दैट वाज द रीज़न कि FC26 वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। बट आई जेन्युइनली होप कि इससे नेक्स्ट जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे, हम भी चाहते हैं यार हमारे पास गेम्स हैं, वी डोंट पर्सनली केयर के मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट लाइक आई हैव टू इन्वेस्ट समथिंग एल्स और समथिंग लाइक दैट। ऑल वी नीड टू डू इज़ जस्ट स्विच द गेम। बट एट द सेम टाइम इनकन्सिस्टेंसी, रैंडम क्रैशेस, ये ऐसी चीज़ें हैं इनके ऊपर एटलीस्ट गेम इन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करवा रही हैं, गुड फॉर देम। वो अगर लाइव स्ट्रीम नहीं करवा रहे और मतलब वो मतलब कॉन्स्टेंटली इस तरह से होता है कि गेम क्रैश कर गया, दोबारा से आप मैच स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज़ द फॉर्मेट दैट दे आर ट्राइंग टू पुल ऑफ, गुड फॉर देम। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। और ये मतलब अच्छी बात है रिलेटिवली, इट्स द न्यू गेम। अपॉर्चुनिटीज़ मजीद जितनी भी आएंगी वैसे 26 के अंदर आएंगी, तो आई गेट इट, आई रिस्पेक्ट दैट। बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट अप फॉर इट। हम लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, एंड दैट्स नेवर गोना हैपन। We are never going to compromise on the quality of the depiction of esports that we are trying to create uh, to change the narrative of esports in Pakistan. So this is the summary of why we did not go for FC26 or what's happening. So okay, what's happening is we are setting up the finale और टॉप फोर की ये भी क्लोजिंग सेरेमनी चल रही है। We'll be right back as soon as the closing ceremony is over. अभी उनका कुछ शूट है, कुछ हमारा मीडिया टीम का कंटेंट है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। और इंशाल्लाह प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @gamein.pk, यू कैन check the Instagram profile in the stream as well। और आप इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करें, आपको इंशाल्लाह हमारा मीडिया भी मिलेगा, लाइव कवरेज मिलेगी, हाउ द प्लेयर्स वर हाउ दे वर रिएक्टिंग, हाउ वाज द एम्बियंस, हाउ वाज एवरीथिंग, हाउ इंटेंस इट वाज। and I was really shocked to see how intense the matches were. So yeah, follow us on Instagram. So we'll be right back inshallah, or probably we'll just live stream. We'll start a new live stream for the finale, the grand finale, in a couple of minutes inshallah. Have a nice day, and it was lovely to get to talk to you. Assalamu alaikum.
so the first half kicks off. This is the Real Madrid starting lineup. Thibaut Courtois is in goal. Antonio Rudiger plays alongside Okay, so Eder we are Militao back with in central the defence. loser final. Vinicius Junior Adil starts Abbas with versus Rodrigo Mohamed in Ahmed, the and wide whoever wins positions, is gonna and the main compete, man up front and is none other than Kylian Mbappe. Sarang Kiani. So This is the we Real all know who Madrid you're starting supporting. lineup. Thibaut बल्कि Courtois is in I would goal. suggest कि आप लोग हमें Plays बताएं with कि यार Ferland Mendy in the fullback positions. do you Federico think this match will Valverde go to plays extra with time? Jude Bellingham Who's in gonna win? central midfield. Who do you think And is the gonna main win? man up front is Kylian Mbappe. Adil Abbas or Mohamed Ahmed? Or if you were to take sides in the finale, who's gonna win the finale? The first blow struck very early. Not saying it's gonna be Adil. Not saying it could be Mohamed Ahmed, but who's gonna win the finale? That's the most important question that we are supporting Ashraf bhai. I am still supporting Ashraf bhai. माशाल्लाह हमारी दुआओं में हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे. अल्लाह उनको मजीद प्रोफेशनली एक्सेल करने की तौफीक अता फरमाए और इंशाल्लाह हमारी मजीद लाइव स्ट्रीम्स के अंदर आए. It was lovely to have such a fun time with you guys, mashallah, over the comment section. You guys gave us some energy, a lot of energy, mashallah. What a beautiful goal by Adil Abbas dominating the league. और I feel like Mohamed Ahmed is under pressure, mashallah, 2 goals पड़ चुके हैं और it's very decent gameplay by far. You think Sarang is gonna win the tournament? Mbappe. Okay. So we have conflict. Now there could be a real chance developing. कुछ लोग कह रहे हैं कि Oh, सारंग they were जीतेगा, getting कुछ लोग कह रहे हैं interested कि there, बादल but not जीतेंगे. anymore. It's lovely to see कि you guys are supporting both the participants. I feel like personally इससे पिछले जितने भी हमारे tournaments रहे हैं उसके अंदर the winning prize of Battle of Ice is basically 2 lakhs, or it is divided into basically 3 different segments. It's taken FIFA singles and FIFA duos. तो बेसिकली कल डुओस का टूर्नामेंट हुआ था, उसका जो विनिंग प्राइस था दैट वाज 30,000. आज सोलोज है, इसका विनिंग प्राइस है 50,000. और कल हम लोग टेकन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका प्राइस पूल है 1 लाख. तो दैट्स हाउ इट गोस. इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा मैच का. और हारून इट वाज लवली टू हैव यू ओवर यार, माशाल्लाह. आई फील लाइक की प्रेजेंस बहुत अच्छी रही है. No need to stop the play, on they go. To see you, the way you have been, actively watching all the matches. I hope you visit us in the next tournament with such an improved game. और उसकी reason ये है कि Mbappe. I've seen people. Well, it did look promising, I've seen people get disqualified in the first round. पहले tournament में, and I've seen people dominate the next tournament. And the game stops with the award of a free kick. Even winners as well. So you could be that person, inshallah. Once again, Adil is dominating with 3-0. Such a pleasant surprise, mashallah. और सबसे हैरान कुन चीज़ जो है वो ये है कि it's not some random guy who is scoring such good scores against. Mohamed Ahmed could be a little bit disheartened. It was the underdog he lost to. तो इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि how better it would be, but at the same time जब हम इस तरह के टूर्नामेंट्स की बात करते हैं या प्रोफेशनल गेमिंग की बात करते हैं तो it's जितना स्किल्स इंपॉर्टेंट है जितना बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम आपके नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. द वे यू हैंडल प्रेशर, द वे यू हैंडल लॉस, द वे यू हैंडल सक्सेस, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो डेफिनेटली आई हैव सीन पीपल क्रम्बल जस्ट बिकॉज कि उनसे उस तरह से परफॉर्म नहीं हुआ. दे कुड नॉट डोमिनेट दैट मच. तो they were not even happy about winning the match just because they could not score 7-0 or 6-0. So personally I feel like a person should be humble, personally speaking, or he could be something on, but it's not found its target. Intercepted. क्या होता है? And there's the whistle. It's a penalty. Inshallah Abdurrahman, thank you so much for your kind words, yaar. Honestly, we have been working so hard. The job from the spot. 4-0 by Adil Abbas. और once again dominating. इतना फर्क पड़ता है जब आप अपनी nerves lose करते हो. As I have said before multiple times,
Mohammad Ahmed is a very decent player. He's a player who has scored, runner up and winner on multiple different events. लेकिन ऐसा बंदा फाइनल स्टेज के ऊपर चोक कर रहा है. What's the reason? Esports is not just about skills. It's not about you know आप how fast are your fingers or how skilled you are. It's also about not losing your composure. It's also about अपने आप को proper एक control के अंदर रखना. That's like very important. और I've seen people crumble as I've said before. तो एक और दफा बहुत ही अच्छी possession और 5-0. Of course, he scores another goal. So yeah, it's also a one-sided goal. Sorry, it's also a one-sided match. It's very difficult. I've seen Mohammad Ahmed score multiple comebacks, लेकिन इसमें comeback करना is very difficult. No idea what's going on around him. Mbappe. Punts it back. And the attack is over. Good defending. Yeah, thank you so much, Abdurrahman, for wishing us all the best. Mbappe. Oh, he set up the shot nicely, but that's all you really can give praise for there. Feels good to be surrounded by such quality. Militao. You guys make this event. हम लोग आपके बगैर कुछ भी नहीं है genuinely, और I honestly thank you so much every single one of you to be a part of it. बहुत अच्छा लगता है. Support this event. अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे कि हम multiple. Okay, let's. One more to the total, and there's no sign of them stopping there. Asir, tell us about for GAMEINN event को organize करना कैसा होता है, mentally भी, physically भी, और if we talk about the financial aspect, how is it like to organize such events? Assalamu alaikum boys, what's up? I'm really sorry firstly कि मैं थोड़ा सा break पे चला गया था. I was organizing. So सीन इस तरह से होता है boys कि हम लोग हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं थ्रू आउट द ईयर हम लोग इनको पहले ही प्लान कर लेते हैं कि किस टाइम किस डेट्स को हम लोग किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे. सो इस सारी प्लानिंग के बावजूद हमें कुछ चीज़ों को ऑन स्पॉट डिसाइड भी करना पड़ता है. एंड इतने सारे प्लान्स ऑन स्पॉट चेंज हो रहे होते हैं, लाइक हमें कुछ चीज़ों का पता ही नहीं चलता. और इस दफ़ा हम लोगों ने डुओ को प्लान बिल्कुल भी नहीं किया था. लाइक एट द लास्ट मोमेंट हमें डुओ को ऐड किया हमने, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसको एग्जीक्यूट भी किया. एंड नाउ सोलोस के अंदर हमें इस दफ़ा इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है और हमारे पास इतनी सारी एंट्रीज आई हैं, लाइक और हमें इतने सारे नए गेमर्स ने ज्वाइन भी किया है. और आपने शायद मैचेस भी देखे होंगे, लाइक सारंग इज़ लाइक सो मी, बहुत कॉकी है. तो इस तरह के प्लेयर्स भी बहुत सारे मिले हैं. तो इस वजह से ना हम लोगों को एक तो कंपटीशन भी बहुत अच्छा मिला है. एंड यार आदिल का कमबैक हुआ है, सॉरी अहमद का, मोहम्मद अहमद का कमबैक हुआ है. वन गोल मारा है मोहम्मद अहमद ने, माशाल्लाह. लेट्स होप द बेस्ट. एंड बीइंग स्पेसिफिक टू माय ओन टॉपिक कि हम लोग इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं बॉयज़, बहुत एफर्ट्स लगती है. और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे ई स्पोर्ट्स को सॉर्ट ऑफ इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता, स्पेसिफिकली काफ़ी सारे पेरेंट्स की तरफ से इस चीज़ को बैक नहीं किया जाता, तो काफ़ी सारे बॉयज़ इस चीज़ को ना पार्टिसिपेट कर सक रहे होते हैं, ना ही पब्लिकली जाके अनाउंस कर रहे होते हैं कि वी आर लाइक पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट. तो ये चीज़ पुल ऑफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट फ्रॉम द लास्ट 2 years आई एम सीइंग के काफ़ी सारे पेरेंट्स भी इस चीज़ की तरफ काफ़ी डाइवर्ट हुए हैं. एंड वी आर लाइक एक्चुअली सक्सेसफुल कि हम इस नैरेटिव को हम लोग प्रेजेंट भी कर सकें और हम ब्राउन पेरेंट्स को भी ये चीज़ दिखा सकें कि हमारे पास काफ़ी टैलेंट है ई स्पोर्ट्स के अंदर और हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं. Alhamdulillah, Alhamdulillah. I feel so proud presenting you, this version of GAMEINN. Who knows, we're not here for the. We're not here for the 100-meter race, We're here for the marathon. Let's see what happens 10 years down the line. And the attack is over. Really good defending. Let's see what happens, inshallah. और माशाल्लाह अभी अगर स्कोर्स की बात करें तो it's like very dominating game by Adil Abbas, 6-1. He has been they looked in there. That's stunning nicely cut out. for the tournament.
And over the लूजर फाइनल भी byline, जीत रहे goal हैं kick to come. और लूजर फाइनल में भेजने वाले सारंग क्यानी हमारे साथ फिर मौजूद हैं एक दफ़ा फिर कमेंट्री बॉक्स के अंदर। सारंग, अपने फाइनल से पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने ओपोनेंट को, क्या कहना चाहेंगे? हाउ डू यू फील अबाउट द फिनाले? आई फील प्रीटी गुड। हमारे 3-4 मैच पहले हो चुके हैं, मैं अभी तक एक भी नहीं आ रहा, तो आई डोंट थिंक ये चेंज करूँगा मेरा रिकॉर्ड, बिकॉज ऐसे भाई मैं नहीं सपोर्ट कर रहा सारंग को, सही बात बता रहा हूँ। आई एम टीम आदिल, ही इज सच अ कॉकी गाय, बट यू नो एट द सेम टाइम I've seen so many comments कि you know he's so cocky, but rightly so, and I agree. इसका गेम प्ले, इसका possession, इसका you know dominance, it's absolutely stunning, and I respect the game, I respect the man, and it's so lovely to have you over, sir. Speaking of pace, this could be dangerous. Don't do that. I am really sleepy. Can he finish? Here it is. बिल्कुल ऐसे ही भाई बाकी आदिल is a very decent player as well. Basically सारंग का comment ये था कि he is lost to Adil. So I have no idea कि इससे पहले के अलावा को Well, it was looking good, but ultimately nothing doing. He has actually won the duo. और अगर हम आज की भी बात करें क्वालिफायर्स की, तो सारंग is the one who put Adil Abbas in the loser bracket. So you know there is something to it as well. But at the same time, yes, Adil Abbas is such a phenomenal player. और देखते हैं कि हमारा फिनाले किस तरह से टर्न आउट होता है, और let's see what happens. So as far as I can tell, you know, the finale is gonna be Adil Abbas versus Sarang Kyani. और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अल्लाह बहुत बरकत डाले इसके अंदर. वी नीड अ लॉट टू पुल ऑफ व्हाट वी वांट टू, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ यू watching us, commenting on the videos, live streams, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके. और you know this is the moment that makes or breaks people. So अगर आदिल भाई पहला मैच जीत गए तो राउंड होगा. यस, बेसिकली दिस टूर्नामेंट इज डबल एलिमिनेशन, तो विनर को एडवांटेज है. अगर सारंग ये मैच हारता है फॉर एग्जांपल, तो आदिल अब्बास को दोबारा हराना पड़ेगा सारंग. और अगर फॉर एग्जांपल सारंग जीत जाता है, तो he's gonna be the winner of the tournament and securing 50,000 prize pool for FC25. So yes, as I was saying, हमारे जितने भी viewers हैं, हम लोग फिनाले की जो है ना वो live stream different करेंगे. This was the live stream for top 8, and we're gonna end the stream. We're gonna take some rest. I'm gonna drink some water. You know, we're just gonna calm ourselves down. We're gonna start our live stream within 5 minutes, but it's gonna be a different stream. So make sure कि आप हमारे जो YouTube चैनल है उस पर जाएं, हमें सब्सक्राइब करें, और जो हमारी नई लाइव स्ट्रीम आ रही है आप सारे उस पर शिफ्ट हो जाएं. Make sure to watch the grand finale live. It's Adil Abbas versus Sarang Kyani, hopefully. Real being afforded too much space here. अरुण भाई आप ही यार आज हम फिनाले देखने जा रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ गेम ही नहीं आना. It's so fun. We're here having fun. बाहर माशाल्लाह it's really intense, और it's everyone against Sarang Kyani. So you know, let's see what happens. So the winner of this match is Adil Abbas, or we will see you in the next stream. It was so much fun. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, the way you have supported हाशिर भाई, जिंदाबाद हाशिर भाई from my side as well, and it was so much fun, honestly. Let's see you in the next stream in 10 minutes. Have a nice day. Assalamu alaikum. Just a couple of minutes. And before we end the stream, we have Mohammed Ahmed. MashaAllah, Mohammed Ahmed, you have been so consistent throughout the tournament. मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है. I know it's personal, but I've seen you play multiple times हमारे tournaments के अंदर, ठीक है?
डू यू फील लाइक कि जिस तरीके से सारंग ने गेम डोमिनेट की है, ठीक है, और जिस तरीके से आपने उसको थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्म करते हुए देखा है, उसकी वजह से आप प्रेशर की वजह से उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए? बिकॉज आई हैव सीन यू मेक कमबैक्स, आई हैव सीन यू मेक कमबैक्स फ्रॉम 3-0, आई हैव सीन यू, यू आर सच अ टैलेंटेड प्लेयर माशाल्लाह, ठीक है, आई हैव सीन यू प्ले सो मच बेटर देन योर परफॉर्मेंस टुडे। मैं किसी किस्म का बैश नहीं कह रहा, आई नो जितने भी प्लेयर्स हैं FC26 पे शिफ्ट हो गए हैं, आई रिस्पेक्ट दैट एज वेल, बट एट द सेम टाइम आई हैव सीन योर गेम प्ले। तो अगर इफ़ यू वर टू टेल मी कि यार दिस वाज द थिंग दैट हैपेंड, ऐसा कुछ हुआ है, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड नॉट योर परफॉर्मेंस नॉट बीइंग अप टू द मार्क? First of all, Alhamdulillah, and I didn't sleep well, so that's a big issue. So I slept here for 10 minutes before I play Sarang, and when I defeated, I was like bored and want to go home to sleep. That's why. Understandable, and that's exactly what I was trying to say. FIFA or any tournament, it's not about just skills. It's about a lot of things. It's about pressure. It's about proper mental peace. It's all about what you feel inside as well. So you were saying that you did not gave your absolute best because you were tired. I respect that as well. It's been more than 14 hours since you have been doing this tournament, so I respect that as well, and I respect your honesty. It was so lovely to have you over, and we wish to see you perform absolutely stunning in the next tournament, and I hope you win the next tournament as well. Thank you so much for having us. Thank you, thank you. Okay, guys, so this was Muhammad Ahmed. It was lovely to have him over. Or inshallah, we'll see you in the next stream. Assalamu alaikum.